हेलो, हाँ जी, मैं नमस्कार ना सर। जी हम लोग लाइव हैं सर। नहीं नहीं, ये मेरा क्रोम कुछ गड़बड़ कर रहा था इसलिए बोला रुक रहा है। तो संदीप सुनाई दे रहा है? जी जी सुनाई दे रही है सर। हाँ जी सुनाई दे रहा है। तो आज का स्ट्रीम है हमारा गोवा के ऊपर। पता नहीं पब्लिक को मालूम है कि नहीं मालूम है। गोवा में भी वही हुआ था जो हमारे साथ में इन मुसलमानों ने किया था। गोवा में पुर्तगीज आए थे और पुर्तगीज लोगों ने भी वही नंगा नाच खेला था जो मुसलमानों ने बाकी जगह पे खेला था। मैं अभी बैक स्टेज में बात कर रहा था दादा से कि जिस समय ये पुर्तगीज वहां पे रूल कर रहे थे उस समय तो मुसलमान भी रूल कर रहे थे बाकी जगह पर, तो मुसलमानों ने उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? तो सुनाई दे रहा है? जी जी सुनाई दे रही है सर। और बाकी जगह पर ये लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेज लोग भी थे। अंग्रेज लोग खैर तो उनके भाई भाई थे, उनको तो ज्यादा जरूरत नहीं थी। बट आई वाज सरप्राइज कि इन लोगों ने इतना ज्यादा, मतलब जब से वो 1561 के आसपास से लेकर के और 1872 तक इतना ज्यादा टॉर्चर किया है, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सबके ऊपर इक्वल ट्रीटमेंट किया उन लोगों। तो जी जी अगर बाजवा साहब आपको मालूम है थोड़ा बताइए, इसके बारे में प्रकाश करिए, फिर हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। क्या क्या कारण होगा कि इन लोगों ने उनको, ये जो मुस्लिम थे, औरंगजेब था और जहांगीर थे, इन लोगों ने क्यों नहीं एक्शन लिया? मुझे ज्यादा पता नहीं इसके बारे में। बस मुझे इतना पता है कि जो गोवा इंक्विजिशन हुआ था, वास्को डे गामा जब आया इंडिया में तो उसको मेडागास्कर तक वो पहुंच गया था। मेडागास्कर जो अफ्रीका में है, उसके आगे उसे कोई गुजराती मर्चेंट मिल गया, गुजराती व्यापारी मिला जिसने उसे इंडिया का रास्ता दिखाया। तो इंडिया में वो कालीकट आया। तो उसके बाद से ये सब स्टार्ट हुआ। तो इंडिया में भी हमारे जो वहाँ के राजा थे, महाराजा थे, साउथ के अप टू गोवा, उन्हीं की बदौलत हम ये कहेंगे कि हमें अभी तक उसी कीड़े में काटा हुआ है। बाकी मैं सुनने को बहुत उत्सुक हूँ। प्लीज प्रेम जी से पूछ लेते हैं। प्रेम जी अंदर आओ तो बताओ, आप बताओ कि इन मुसलमानों ने, मुसलमान शासकों ने इनको क्यों नहीं रोका? ये जो पुर्तगाल में जो ये जो गोवा में तमाशा करते हैं पुर्तगीज, हिंदू, ज्यूज, मुस्लिम सबको मार रहे थे, क्या प्रॉब्लम था? ये क्यों नहीं बुक कर रहे, बढ़ कर रहे थे? आप बताओ आगे। अच्छा, उनके पास लिंक नहीं होगा। लिंक तुम क्या, लिंक तो मैंने भेज देता हूँ इस टीम में सबको, तो शायद तकलीफ होती होगी, ये दे देता हूँ। संदीप, यहाँ के मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है, कभी गर्म हो जाता है कभी ठंडा हो जाता है, साला गला खराब हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आजकल तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश नहीं हुई इतने दिनों से, तो मेरी सब सब्जियां ठीक हो गई हैं। अरे कल दिन भर बारिश थी, रात शाम के टाइम में 23-24 हो गया था, डिग्री सेल्सियस हो गया था, ऐसा हुआ था। हाँ, यहाँ पे ऐसा ही होता है। अभी कभी सुबह गर्मी, शाम को इतनी ठंड, सुबह एसी चलाना पड़ता है, रात को हीटर। तो प्रदीप तुम बताओ यार कुछ। अभी संदीप अमेरिका, देखो अमेरिका रहने की जगह तो है नहीं ना, तो ये इसीलिए तो ये हमारे वास्को, यूरोप के सब लोग इंडिया घूम रहे थे, इंडिया को ढूंढ रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते कोलंबस को अमेरिका मिल गया। तो अमेरिका की जगह है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ रहने के लायक तो है नहीं। हम लोग तो यहाँ पे रह नहीं सकते ना। अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में यहाँ पे कौन रह सकता है? इंडिया बिना हीट के, बिना अच्छे घरों के यहाँ पे रह नहीं सकते आदमी। इंडिया इंडिया दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अरे दादा, वो तो शुक्र करो अमेरिका पहले सुपर पावर नहीं था, नहीं तो आर्यंस वहां से आए होते, यूरोप से नहीं आते। वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का जो वातावरण है तो आर्टिफिशियल बना हुआ है। सड़कें सब कुछ अपने घर के अंदर अपने 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 बबल
गुब्बारे की तरह बबल बनाए हुए हैं, वहीं पे हम जी, रहते जी, हैं। तो वास्को डी गामा, कोलंबस, ये सब ढूंढ तो इंडिया रहे थे और अमेरिका मिल गया, और यहाँ के लोगों को कहने लगे इंडियंस है। अरे दादा, मेरे लिए गलती करी ना, उनको ढूंढना ही नहीं था ना, ना ढूंढते ना सुपर पावर बनता। ढूंढना तो इसीलिए था ना कि ये सोने की चिड़िया है, नहीं कि नहीं, कह रहा तो हूँ ढूंढना अमेरिका को गलत ही ढूंढ लिया। तो ये हमारे वास्को डी पॉलन गामा, एलर्जी का भी है ना, हाँ जी, यहाँ तो पर वास्को डी पॉलन गामा एलर्जी साहब, बहुत होती है, पॉलन एलर्जी बहुत होती है इस समय, पॉलन बहुत रहते हैं हवा में। पॉलन बहुत है, हाँ जी सर, हवा में बहुत पॉलन है। तो हमारे वास्को साहब तो घूम रहे थे किस तरह इंडिया को रास्ता मिल जाए, क्योंकि जो मिडल ईस्ट के जितने भी अरबी थे, मुसलमान थे, ये उनको उनके कारवां जो आते थे यूरोप से इंडिया, इंडिया से क्या लेके जाते थे, इंडिया से कपड़ा लेके जाते थे, कॉटन, इंडिया से स्पाइस लेके जाते थे, जितने भी मसाले, क्योंकि पहले तो फ्रिज नहीं होता था, है ना, फ्रिज फ्रिज बिना फ्रिज के आप अपने अपने खाने को कैसे बचा के रखेंगे मसालों की वजह से, और पता नहीं क्या कुछ लेके जाते थे इंडिया से, हर किस्म की चीजें लेके जाते थे। तो रास्ते में इन्हें सब अरबी उर्बी सब लूट लेते थे, तो इन्हें सी रूट चाहिए था, समुद्रिया रास्ता। तो इसी वजह से हमारे वास्को साहब, कोलंबस तो उन्हें तो मिला नहीं, उन्हें अमेरिका मिल गया, और वास्को डे गामा को किसी तरह गुजराती साहब ने, भाई साहब ने इंडिया पहुंचा दिया। और बाकी आपको बताइए, हॉलोकॉस्ट इवेंचुअली, एक गोवा की तरफ पोर्चुगीज थे, थोड़ा गुजरात की तरफ बेल्जियम, और कलकत्ता की तरफ तो इंग्लैंड थे, कलकत्ता के तरफ तो सब लोग आ गए थे, डेनिश, आपका ये डच, पोर्चुगीज, डच, हाँ ब्रिटिश, जी, हाँ, राइट। दादा सब वो सब सारी बात सब। तो ठीक है, ये फरिश्तों के पास सारी टेक्नोलॉजी थी, क्या समुद्र फतेह करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी? समुद्र को डुबोते देते थे कीचड़ के पानी में, नहीं ये टेक्नोलॉजी नहीं थी इनके पास क्या? ना, इसी टेक्नोलॉजी की वजह से तो, और ये टेक्नोलॉजी भी इनकी अपनी नहीं है, इन्होंने चाइना से चोरी की है। जो यूरोपियंस है ना, जी, मैजेलन और मैगेलन, इन्होंने जो नेविगेशन की टेक्नोलॉजी है, किस तरह हमने कहाँ से कहीं कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है समुद्र में, किस तरह नेविगेट करना है एक जगह से दूसरी जगह, ये भी चाइना से चोरी की है। ये तो शुक्र करो दादा, साइंटिस्ट आ गए, नहीं तो ये चपटी धरती पे सूरज घुमारते पकड़ के ऐसे उसके आसपास। हाँ जी, प्रदीप, एक बात और भी तो है, हमारे धर्म में तो ये बताया गया था ना कि समुद्र तो देवता है, उसके ऊपर नाव नहीं चलानी। हम किसने लोग तो कहा? समुद्र के ऊपर से जाने को तैयार नहीं होते थे, ये नहीं, लोग वो तो ऐसा समुद्र को होता पुण्य है मानते अलग थे, अलग जगह पे कैसे भी चलते थे ये लोग। दादा, अलग अलग जगह के अलग अलग रिवाज हैं। कई जगह पे समुद्र को देवता माना गया है और उसके पार नहीं जाना है। किसी जगह पे जो है समुद्र को देवता ही माना गया, बट उसकी सपोर्ट से आप कर सकते हैं। तो ये पुराने लोगों के हिसाब किताब थे, अलग अलग जगह अलग अलग रीति रिवाज। चलो ठीक है दादा, पढ़ो इसको, जी। The हम लोग Goan Inquisition by the Portuguese, बताएंगे फिर। ये ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। The Goan Inquisition by the Portuguese, a forgotten Holocaust of Hindus and Jews. The Goan Inquisition is a disturbing reminder to Goan Hindus about their history and signifies the struggles undertaken by our ancestors to preserve our cultural identity. ये तस्वीर तो भयंकर है, मतलब ये फोटो। The Portuguese Inquisition of Goa is often forgotten and an unspoken event by the secular circles of Indian historians, despite various historical records exposing the gross exodus of not just Hindus but also Jews that had escaped medieval Europe to take refuge in India. The Portuguese Inquisition of Goa started when Vasco da Gama returned to Portugal after he discovered the route to India via Africa's Cape of Good Hope. Upon his return to Portugal in 1510, Gama told the Portuguese royals about the undiscovered route to India, which gave the Portuguese an opportunity to colonize the western coast of India and particularly Goa. Pope Nicholas V soon issued a diktat which gave the Kingdom of Portugal a monopoly on forcing Christianity
upon the locals of the newly discovered areas and mainly India, along with the monopoly to trade on behalf of the Roman Catholic Empire in Asia. Soon after, the Portuguese sent its troops to capture a portion of Goa and set up a colony in the coastal city. Aghast by the local traditions followed by Hindus, the Portuguese were angered by the locals following a religion other than Christianity and ordered all temples within the colony to be shut. This marked the beginning of the bloody Goan Inquisition that comprised of gross human right violations and mass executions of the local Hindu, Muslim, and Jewish populations. In 1541, idol worship was forbidden in the Portuguese colony of Goa, and over 350 temples were destroyed by the Portuguese soldiers. It had been officially declared that a believer of any religion other than Roman Catholicism was forbidden for the residents of Goa. The infamous Francis Xavier and Martin Alfonso were sent to Goa by King John III of Portugal in 1542 to initiate the process of converting Goan residents to Roman Catholicism. On their arrival in Goa, they were enraged by the new Christians of Goa secretly practicing their previous religions, either Judaism, Hinduism, or Islam, while also upholding the Hindu values and traditions. A disturbed Francis Xavier wrote to King John III of Portugal on 16th of May 1546 to impose inquisition on Goa in an attempt to discipline the residents and make them follow Catholicism. The Inquisition banned apostasy of Roman Catholics to Hinduism, Judaism, or Islam and banned the sale of books in the Konkani, Marathi, Sanskrit, and Arabic languages. The use of Konkani was forbidden in the colony of Goa. The Inquisition particularly affected the new Christians of Europe from the Jewish community who had fled to India during the Spanish Inquisition in an attempt to escape the imposition of Christianity and live amongst the Jewish community in India. They had come in search of a life of dignity where they could practice Judaism openly and not in hiding while pretending to be Christian. India was the only country in the world where Jews were given absolute freedom to practice their faith, especially under Hindu kingdoms. Upon the imposition of the Inquisition in Goa, life became comparable to hell for the local Hindu population who were often on the receiving end of persecution and were targeted in particular by the sadistic Christian missionaries. The Christian missionaries called the Hindus uncultured and savages who worshipped black idols resembling demons. The Christians took it upon themselves to force Hindus into leaving the religion and succumbing to Christianity. An Inquisition office was thereby set up which aimed to discriminate against Hindus on all matters possible. Hindus were forbidden from holding any public office, inheriting their father's property, and testify as witnesses in courts. If a Hindu child was deemed to be an orphan by the colonialists, the child was seized by the Society of Jesus, founded by the not-so-saintly Francis Xavier, and made to change his religion. Clear discrimination was seen in social life, where Hindus were forced to sign public documents only after Christians and couldn't be clerks in village offices. In 1567, a law banning Christians from employing Hindus in the colony was introduced. Reference Teotonic R. D'Souza, The Portuguese in Goa, page 28 and 29. The Inquisition office even questioned natives who were suspected of following the previous religions in private. Over a span of 214 years, that is from 1560 to 1774, 16,172 natives were questioned and often tortured for following a religion other than Roman Catholicism. To be questioned by the Inquisition office, a mere rumor of practicing idol worship in private or chanting a Hebrew prayer would suffice for the missionaries to drag the native to the office. Those convicted of following another religion were subjected to heinous punishments, including public flogging, being put on the rack, burnt on stakes, and having one's nails
and eyes crushed by bloodthirsty missionaries. In some cases, entire villages were burnt, with the women and children taken as slaves. Large wheels were used for torture, with those convicted of following Hinduism or Judaism being tied to the wheel and then spun, with almost every bone of the innocent Hindu or Jew being crushed. Hindu children were sometimes taken away from their parents and burnt in front of them, with the parent being tied and forced to witness his child being burnt alive until he accepts to convert to Christianity. Over 4,000 non-Christians were inflicted with such punishments during the course of the Inquisition. In inspiration of the Muslim invaders, the missionaries imposed the Zandi tax on Hindu population, similar to the Jizya tax. Reference: Saraswati's Children, A History of the Mangalorean Christians, Alan Machado Prabhu. IJ Publications, 1999, page 121. Amidst the Portuguese Inquisition, a small group of Saraswat Brahmins managed to hide from the invading Portuguese colonialists and smuggled the famous Mangeshi Shivling of Lord Shiva out of its original site in the Kushasthali Kottalam village and built the renowned Mangeshi temple in Goa's Priol village, which belonged to the Hindu kingdom of Sonde. The Portuguese ravaged homes, destroyed the local culture, and imposed a foreign religion on the local population. Hindus were deliberately targeted by the European invaders in an attempt to convert them to Christianity. Despite the barbarism used by the Europeans, Hinduism survived the attempts to erase it from Indian culture and continued to flourish after Goa was liberated by the Indian government in 1961. The Goa Inquisition is a disturbing reminder to Goan Hindus about their history and signifies the struggles undertaken by our ancestors to preserve our cultural identity. सर आप म्यूट हो सर. मैं बोला व्हाट से कैसे रहे होंगे लोग वहां पर, क्या हालत था सर. मैं जो बताया था थोड़ा थोड़ा मिल रहा है कि नहीं? जो किताब बचपन में पढ़ा था मैं, देखिए थोड़ा बहुत मिल रहा है कि नहीं उससे? यस, क्या बात है भाई, क्या बात है. चलो ये भी पढ़ो थोड़ा सा, ये भी मजा आएगा कम से कम. ठीक है, पब्लिक आज नहीं देखेगी तो कल देखेगी, कम मालूम तो पड़ेगा कि हमारे. अच्छा, फिर नेहरू ने इतने दिन क्यों लगाए इसको लिबरेट करने में? नेहरू को मजा आ रहा था कि और वहां पर कुछ गड़बड़ होता रहा? ये तो लाशों का सौदा करने वाले लोग हैं ना यार. बगल में हो रहा था, कर्नाटका बहुत मतलब अंडर टीपू सुल्तान, दिस थिंग एंड दैट थिंग, फिर भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया इधर. इतना बड़ा वो था जो पूरे कर्नाटका को मतलब इस्लाम में कन्वर्ट करना चाह रहा था, उसने भी कुछ नहीं किया ना. बिल्कुल. One of the most horrible tortures. Goa Inquisition, the epitome of Christian missionary violence. This exhibition is mounted by Francois Gauchier. जी. It was Saint Francis Xavier who for the first time, मैं आपको बताया था ना सर, it was Saint Francis Xavier who for the first time brought torture, violence, intimidation and terror to Goa to force native Indians to convert to Catholic Christians. Introduction. Unfortunately, the challenges that India had to meet were not just the Muslim invaders. Others also came to India with less than respectful intentions. The Portuguese arrived as early as 1498 via the ocean route discovered by Vasco da Gama
via the Cape of Good Hope after Constantinople had come under Arab control. Goa came under the Delhi Sultanate in 1312. Then in 1370, they had to surrender it to Harihara I of Vijayanagar. The monarchs of Vijayanagar ruled over it until 1469. Then it passed on to the Bahmani Sultans of Gulbarg. Then the rule went to the Adil Shahis of Bijapur, during which the Muslim pilgrims embarked on their journey to Mecca from Goa. After that, the Portuguese arrived. Europe had always been interested in India, especially for trade purposes, after it had become obvious to Europeans how much India had to offer, especially with regard to spices, textiles, and other oriental and commercial products. The Portuguese sailor Vasco da Gama was graciously received by the Zamorin, the Hindu king of Calicut, who granted him permission to build warehouses for the goods he was trading. However, this Hindu tolerance was exploited by the Portuguese, who wanted increasing amount of facilities for their purposes and also wanted that all trade with Muslims be abandoned. Their attempt at establishing a base in Bengal had been quickly stopped by the local Sultan Jahangir, who killed 4,000 Portuguese at one time. Thus, the Portuguese had to go elsewhere and went to the western coasts of India. In the first decade after the Portuguese came to India, they exhibited horrible atrocities, including burning Arab ships that carried not only cargo but also men, women, and children to Hajj, chopping off noses of unarmed fishermen, bombarding port cities on the Malabar coast, forcing conversion to Catholicism of women and daughters of defeated men, while also converting temples and mosques into Catholic churches. They harassed natives of the area. The harassed natives of the area went to the Sultan of Gujarat, who brought assistance from Egypt and Turkey for a naval attack on the Portuguese at Chaul in 1507 to 1508. However, the Portuguese viceroy, the Almeida, arranged a large fleet and brought a mighty victory in 1509 against the Muslim fleets at Diu. In 1510, Alfonso the Albuquerque captured the island of Goa and the surrounding territories on the west coast of India from the Sultan of Bijapur and made the capital of the Portuguese Eastern Empire. Made it the capital of the Portuguese Eastern Empire. Goa was a strategic location, and from there the Portuguese could supervise Malabar, control the pilgrim traffic to Mecca, as well as the general trade to Egypt, Iraq, and Persia, including the East Indian spices at the source. However, the Portuguese irked some of the Mughal rulers because of the toil they took on the trade from the port of Surat. They deeply felt that no faith need be kept with an infidel. It was from this period that the word Furangi acquired influence and popular usage. Some of the Muslim rulers, such as Akbar, was a little fascinated by them and gave them freedom to preach their message, and the New Testament was translated into Persian. But Wow. it has been noted elsewhere that Akbar gave the Portuguese preacher, like Xavier, little opportunity for religious discussion when they came to talk with him. Nevertheless, the power over the Indian seas was always in dispute between the Portuguese and the Muslims during the 16th century, as was the superiority of Christianity and Islam, which became more intense. However, the Portuguese did not provide a favorable expression of their religion that was said to be brought by the Prince of Peace, Jesus Christ. They would go without bathing for months and be under the influence of alcohol at any time and would show violence towards unarmed people, women, and children for any reason. They were the epitome of barbarism. An interesting but totally self-serving policy was one that Albuquerque encouraged, which was that of mixed race marriages. His idea was to develop a population that was Portuguese in blood and Catholic in religion, but one that could be committed by taste to Portuguese settlements and thus form a self-perpetuating garrison. This formed the race that has become known as Luso-Indians and later as Goans. The Portuguese were soon followed by European rivals like the French
Dutch, and the British. The rivalry that appeared between the Dutch and the English resulted in the start of the Dutch East India Company that worked primarily in Southeast Asia and Indonesia, known to the Europeans as the East Indies, and the British East India Company, which had to settle for second best, which was India. It was in 1538 that General Ignatius de Loyola in Rome, upon the request of the King of Portugal, sent missionaries to the Orient. To answer the call, Francis Xavier, later known as Saint Xavier, went to Goa in 1542. Though he started his preaching projects on his own, later he also laid the foundations for the Inquisition in Goa, similar to that of Spain and Portugal, where he had experience in persecuting thousands of Jews and Muslims. Saint Francis Xavier worked feverishly to convert as many Hindus to Christianity as possible and baptized as many natives as he could, and exploited the impressionability of children as much as possible. He once wrote in a letter to the Society of Jesus, following the baptisms, the new Christians return to their homes and come back with their wives and families to be in turn also prepared for baptism. After all, they have been baptized. I order that everywhere the temples of the false gods be pulled down and idols broken. I know not how to describe in words the joy I feel before the spectacle of pulling down and destroying the idols by the very people who formerly worshipped them. He went on to say that even children show an ardent love for the divine law and an extraordinary zeal for learning a holy religion and imparting it to others. Their hatred for idolatry is marvelous. They get into feuds with the heathens about it, and whenever their own parents practice it, they reproach them and come off to tell me at once. Whenever I hear of any act of idolatrous worship, I go to the place with a large band of these children, who very soon load the devil with a great amount of insult and abuse than he has lately received of honor and worship from their parents, relations, and acquaintances. The children run at the idols, upset them, dash them down, break them into pieces, spit on them, trample on them, kick them about, and heap on them every in short, heap on them every possible outrage. This is how Xavier taught children to behave towards their own heritage. He did this in Quilon, and this was after the Hindu king of Quilon had respectfully received him and benevolently given him a large grant of land and other resources so that he could build churches for his religion. What a way to pay back the respect and liberality the king had shown him. Once, when some Hindus had been baptized as Christians, Xavier heard that they were still worshipping deities in their homes. He went there and ordered the hut to be burned to the ground as a warning of what would happen to others if they did not follow the Christian tenets and resorted to their old ways. This was but an example of Saint Francis Xavier's violent form of evangelism. All this by proselytizing by Xavier was but to further the Portuguese imperialistic designs, since he was under the protection of the Portuguese king who wanted to expand in power and influence in the region. What better way to do that than to first expand the religion and Western values through the area, which would make it easier for them to expand the kingdom? It is a method that is still used today. Though Saint Francis Xavier has been given much respect in India, with many schools named after him, his real intention of coming to India was to uproot paganism or Hinduism and put an end to the ancient Vedic traditions, and he did whatever he could to do that. Francis Xavier was especially vicious towards the Brahmins, and once said that if there were no Brahmins in the area, all Hindus would accept conversion to our faith. This is from the Atrocities on Hindus by Missionaries in Goa by V. Sundaram. Xavier, who was made a saint by the church for his activities, boasted of having destroyed hundreds of Hindu temples by himself and miraculously converted people by the thousands. But how miraculous this was can be seen in the following descriptions.
M.D. David, author of Western Colonialism in Asia and Christianity, writes, a particular grave abuse was practiced in Goa in the form of mass baptism and what went before it. The practice was begun by the Jesuits, as was initiated by the Franciscans also. The Jesuits staged an annual mass baptism on the feast of the conversion of St. Paul, January the 25th, and in order to secure as many as neophytes as possible, a few days before the ceremony, the Jesuits would go through the streets of the Hindu quarters in pairs, accompanied by their African Negro slaves, whom they would urge to seize the Hindus. When the blacks caught up a fugitive, they would smear his lips with a piece of beetle, making him with a piece of beef, sorry. When the blacks caught up a fugitive, they would smear his lips with a piece of beef, making him an untouchable among the people. Conversion to Christianity was then his only option. Others often found conversion politically useful, like the fishermen of Tamil Nadu, who sold their souls to Christian priests in exchange for the protection of the Portuguese army against their Muslim neighbors. However, the deal was not completely voluntary. Those fishermen who refused to convert were attacked on the Malabar coast by the Portuguese navy. Entire fishing boats were set ablaze as their women and children helplessly watched from the shores. Those fishermen who jumped into the water to save their lives were either bayoneted or shot dead. To fuel hatred of the newly converted Christians against Hindus, the Portuguese would spread false stories. One referred to Thomas the Apostle, who was said to have landed in India in 52 CE at Cranganore on the Malabar coast and established the first church, later known as the Syrian Church, in 68 CE. St. Thomas was allegedly martyred near modern-day Chennai, Madras, and a large cathedral there now is said to house a basement crypt containing the relics of St. Thomas. However, there is controversy with evidence that St. Thomas never went there. Also, in the Cathedral of St. Thomas at Chennai, Santhum Cathedral Basilica, there is also a painting that shows St. Thomas praying while he is being stabbed to death with a lance by a Ramanuja Vaishnava Brahman wearing Vishnu Tilak. It is interesting to remember that the Sri Vaishnavas and their Tilak do not come into history until the 11th century, almost 1000 years later. Therefore, this shows the deceitfulness in their stories and conversion tactics. There was little, if any, conversions based on the purity of their teachings, but they instead had to rely on spreading lies and treachery and even savagery to make converts to their religion, as we will soon see. At least from 1540 onwards, the Portuguese destroyed all Hindu temples in the area, over 300 of them, and stopped all Hindu. दादा एक मिनट वेट करो बहुत देर हो गया, इतना डिस्कस कर लो, उसके बाद में आगे चलते हैं, बहुत लंबा आर्टिकल है ये। बाप रे भाई, क्या तमाशा करके रखा था इन लोगों ने। सर ये सब तो मुझे तो पता था सर, बहुत पहले से, बचपन से ही पता था। नहीं, सिंस यू आर इन कलकत्ता ना, हम तो बॉम्बे में नौकरी करने गए थे, वहां पर तो हम लोग इनके साथ में नौकरी भी किए हैं। गोवा जो है, गोवा के ऑफिसर थे हमारे पास, जब वी आर लोग बताया नहीं कभी ये चीज, लोग बताया नहीं कभी। नहीं, वहां पर तो ये सब प्रोहिबिटेड है ना, यू कैन नॉट टॉक ऑफ रिलीजन। लाइक अभी कोई मेरा बॉस आ जाए, मुस्लिम आ जाए, क्रिश्चियन आ जाए, जीव आ जाएगा, तो वहां पर तो नहीं बात करते थे हम लोग, क्या है क्या नहीं है। बट बाहर कभी बताया नहीं कि ऐसा भी है। मुझे तो सर ये टीचर लोग बताया मुझे, जो खुद मतलब कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, खुद बताया मुझे ये चीज। दादा ये इनका रोज का काम है। कोई एक मिनट प्रदीप, बॉम्बे में मतलब अभी भी उनको काफी, जैसे अभी वहां पर जैसे डॉन बॉस्को स्कूल है और ऑक्सिलियम कॉन्वेंट है, सारे के सारे हैं। बांद्रा साइड में जितने भी सारे के सारे हैं, वो कौन सा मदर मेरी का जो चर्च है ना, वो मन्नत के बगल में, माउंट मैरी चर्च। हाँ, माउंट मैरी चर्च, सारे के सारे वहां पर। ये जो अपना माहिम में सामने है चर्च, जहाँ पर
कोई भी जाकर के वहां पर बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन कुछ होता रहता है, तो अभी भी वहां पर हिंदू लोग भी जाते हैं मोमबत्ती अजीब तमाशा जलाने, है वहां का, मतलब हिंदू जाते हैं वहां मोमबत्ती जलाने। हर कोने में तो एक चर्च है वहां पर, और वही भी अच्छे अच्छे स्कूल है, तो कौन तो वो करेगा। अच्छा, इनके स्कूल्स में भी हिंदू बच्चे ज्यादा हैं, हाँ? अब तो पढ़ाई सभी में भी जाते हैं। तेज, नहीं मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई में भी तेज हिंदू ही लोग हैं, और स्कूल का जो नाम रोशन करते हैं वो हिंदू ही करते हैं। आज तक मेरे स्कूल में कोई एंग्लो इंडियन या कोई मतलब क्रिश्चियन कभी मतलब अच्छा मार्क्स लेकर नहीं आया। वो माहिम में कौन सा है, स्कॉटिश ना, स्कॉटिश है वो भी शायद इनका ही है ना, क्रिश्चियन थी, मिशनरी का ना वो। ये मिशनरी का है, लेकिन ये सेंट फ्रांसिस वाला जेसुइट्स है, सोसाइटी ऑफ जेसुइट्स। डॉन बॉस्को वाला सेलेशियन सोसाइटी है। इनका अलग अलग संप्रदाय है ना। हाँ जी, मजुमदार जी और सिंह साहब, सिर्फ दो ही जी साहब। सोचिए, या तो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट। जितने प्रोटेस्टेंट, भी, हाँ। हाँ, जितने भी फ्रेंच हैं, जितने भी स्कॉटलैंड के हैं, ये कैथोलिक होंगे, या आयरलैंड के होंगे, ये कैथोलिक होंगे, जो आयरलैंड इंग्लैंड के के हैं। कैथलिक्स ज्यादा हैं, हाँ वहाँ जी, तो इनके साथ हाँ, मतलब झगड़ा चलते ही रहता है, वो क्योंकि प्रोटेस्टेंट होंगे। हाँ जी, इंडिया में आप, इंग्लिश प्रदीप तुम प्रोटेस्टेंट्स हैं। लिंक खोलो तो पढ़ो, तो मैं थोड़ा सा निकलता हूँ बाहर, कुछ मेरे को आवाज आते रहे लोग। बस एक बात ध्यान से सुनिए वीबी सिंह साहब, कि इंडिया में जितने भी पुराने हमारे शहर हैं, उनमें कैंट होता था, और उनमें एक शहर होता था ना, सिटी एंड कैंट। जी जी जी। और कैंट में एक जगह पे होता था कैथोलिक चर्च, चर्च, है ना, और सिविल बिल्कुल लाइंस बिल्कुल। कहते थे आप उसे, सिविल लाइंस। उसके एक जगह पे कैथोलिक चर्च होता था, और उसके दूसरे एंड पे प्रोटेस्टेंट चर्च होता था, राइट। ऑलमोस्ट बिल्कुल ऑल बिल्कुल। नॉर्थ इंडिया में जितने भी सिटी हैं, हर एक में ऐसा है। हाँ, हमारे यहाँ भी है। हाँ जी, हम आई मीन छोटे से छोटे शहर में सिविल लाइंस होगा, यानी कि बिल्कुल सिविल बिल्कुल, दादा जहाँ देखो, कैंटोनमेंट्स हैं। सिविल लाइंस इन्होंने का मतलब टैक्टिक्स कि जो बाकी के इंडिया के लोग हैं वो अनसिविल है, सिर्फ अंग्रेज जो है वो सिविल है। दादा इन्होंने जो टैक्टिक्स पहले से ही डेवलप कर ली थी, इनको झूठ बोलना होता है हर जगह। आप देखो, ये जो है हॉस्पिटल्स में पड़े होंगे, जो हाँ, मरने वाला होगा उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब उसके उस मरने वाले के कन्वर्ट होने ना होने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन पड़ता है फर्क। फर्क ये पड़ता है कि जब वो कन्वर्ट होगा तो उसके जो बच्चे होंगे या और कोई होंगे, उनको कन्वर्ट करना ईजी पड़ जाएगा, और उनको इजी ये इसलिए पड़ता बताना है है। कि उनको लगेगा कि हाँ मेरे पिताजी सड़क पे पड़े हुए थे तो इन लोग उठा कर ले गए, सेवा की। नहीं दादा, बिना सेवा करे भी ये पहुंच जाते हैं कि अगर ये सही हो जाएंगे, हम प्रेयर करेंगे, ये ठीक हो जाएंगे, तो आप जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होंगे। अब क्या होगा, या तो वो ठीक होगा या तो वो मर जाएगा, दो में से एक काम होगा। ठीक है। अच्छा, गांव में क्या दिखाता है जानते हैं? इनका लकड़ी का जो क्रॉस होता है उस पर हल्का सा जीसस का मूर्ति है, और अपना जो कोई हिंदू देवता का मूर्ति, दोनों जो है पानी में डाल देते हैं, और बोलते हैं कि देखो तुम्हारा जो है आइडल डूब गया, और ये देखिए देखो जीसस क्राइस्ट तैर रहे हैं ऊपर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है, हमारे लोग तो हाँ जी दादा, नहीं दादा, ये आपको पता टैक्टिक्स है, खेलते हैं ये लोग। आपको पता है चौधरी देवीलाल हरियाणा, जी जी उनको वोट पता कैसे मिले? उन्होंने पूरे जी। इलेक्शन में जाके क्या स्पीच दी थी लोगों को, कि ये साले हमें जो पानी देते हैं ना, इसमें से बिजली निकाल के पानी देते हैं, ये पानी हमारा जी। खराब है। हम्म। इस वजह से उन्हें वोट मिली। हाँ, हमारी इंडिया की जनता इतनी बोली है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तो पानी से ही मतलब निकलता है, जनरेट तो वैसे ही किया जाता है टरबाइन से। हाँ, पर पानी के बीच में से बिजली कैसे निकल जाएगी? बिजली निकाल दो तो पानी में जान नहीं है ना फिर, इसीलिए तो आदमी बीमार पड़ जाता है। पानी में बिजली ना रहे, मेन एनर्जी वही है। बोलता है देखो कितना मतलब तगड़ा चीज है, बल्ब हाँ, जला देता है, जब तुम्हारा पंखा घुमा देता है, और जब वो वही। बोल रहा था तो उसको जो है 10,000 वोल्ट वाली वो लाइन पकड़ा देनी थी, क्वीन वाली। कहते ले सारी एनर्जी ले ले। नहीं नहीं, वो संदीप, ठीक है, वो अलग। हाँ जी, हमारी जनता इतनी भोली है। संदीप, जी, परसों मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो गुजरा वाला है दैट वाज गुर्जरा वाला, गुर्जर लोग रहते थे वहां पर, हाँ जी, हाँ जी, उन लोगों ने उसको बसाया था, मतलब दैट वाज सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय जाट, गुर्जर्स लोगों ने बसाया था उसको, राइट। हाँ उन जी, लोगों ने। गुर्जर और जी जी जी।
गुजरात तोमर भी है लोगों ने एक शहर। बसाया था, ऐसा कुछ था। हाँ जी, तो एक इसको इन शहर लोगों ने गुजरात बिगाड़ भी है, करके गुजरावाला कर दिया। राइट। एक शहर गुजरात भी है जो जो वो भी गुजरों का है। हाँ गुजर हाँ होते हैं यादव, हाँ, गुजर होते हैं यादव, जिन्हें अब यूपी में यादव कहते हैं। सही बात है। देखो भाई, दादा लोग बाग इसको इसको कंटिन्यू अप्रिशिएट करें। कर रहे हैं। पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, पढ़ता हूँ सर। ये जो कमेंट है, कमेंट कमेंट अच्छा, पढ़ता हूँ सर, एक सेकंड। जी, the world is big. At the rate of Deepak Sharma. Thank you. Please share with your friends, etc., on WhatsApp and other social media. Thank you, Mr. Sharma. The world is big. Thank you. Thank you very much, sir. Deepak Sharma ji. ग्रेजुअली आवर मैसेज इज स्प्रेडिंग, लाइक धीरे धीरे पहुंच रहा है। चलो दादा ये नहीं, YouTube पे तो रहेगा ही, जो देखेंगे समझेंगे अपने आप हाँ, सारी हिस्ट्री टाइमलाइन में अपने आप फिट करते जाएंगे। करेक्ट, ठीक है, आगे go ahead, पढ़ता हूँ आगे सर. चलो, आगे चलो, At आगे least चलो। from 1540 onwards, the Portuguese destroyed all Hindu temples in the area, over 300 of them, and stopped all Hindu worship and even popular traditions that were not directly connected with the religion. From studies by K.V. Paliwal, president of the Hindu Writers Forum in New Delhi, as presented in his book Atrocities on Hindus by Christian Missionaries in Goa, many of the churches that were built in Goa were constructed on top of the remains of Hindu temples that were destroyed by the Portuguese. It was in 1560 that the King of Portugal sent his first inquisitors to India after the request of the preacher and Hindu hater Francis Xavier. This was the start of the compassionate and merciful Goan Inquisition that tortured and killed many thousands of Indians who merely followed the traditions of their culture. This was a real change in the presence of the Portuguese when, being intolerant in religion, they introduced the Inquisition with all its horrors. Inquisition was the court established by the Catholic government for search of and for punishing heretics. This justification for cruelty, mercilessness, and corruption was called the Holy Office. It had been established in Spain in 1481 and in Portugal in 1541. Thus, it was set up in Goa in 1560 through 1774 and 1778 to 1812. This was regarded as barbaric and totally cruel and unjust from the Indian standpoint, and it was not only directed at Hindus but also in the rough handling of Syrian Christians of Malabar to secure their submission to the Catholic faith. The laws enforced by the Inquisition in 1560 were many and demanded such things as the prohibition of the use of Indian musical instruments and Indian songs during marriage ceremonies, the use of betel and pan, and the distribution of food to poor people in honor of some deceased person. Other prohibitions concerned the harvest festivals, cooking rice without salt, fasting on the holy days on Wednesdays, full moon and the new moon, or bathing before entering the kitchen for preparing meals. They also ordered all the coconut trees and tulsi plants to be uprooted from all gardens. All those who disobeyed the orders of the Inquisition were subject to horrible punishments. More than 2,000 people were burned alive, and many more were tortured. Over time, they established many more laws to stifle the Hindu population of the area in different ways. For example, in June of 1557, the king Di Jiao ordered that no government official should utilize the services of the Brahmins or other infidels. It contravened the official if contravened, the official would lose his job, and the Brahman will become captive and lose all property. All jobs must be given to Christians and not to Hindus. This was to make the Hindus completely helpless and more or less slaves.
On 2nd of April 1560, the Viceroy ordered that the Brahmins should be thrown out of the island of Goa and the lands and fortresses of the King of Portugal. On November 27, 1563, a law was passed to the effect that all Hindu physicians, carpenters, blacksmiths, and shopkeepers were asked to sell their property and leave the Portuguese territory. On 3rd of April 1582, a royal decree was reissued that no Hindu, regardless of his status or condition, should hold any public office. All Christian officials were forbidden from utilizing the services of any Brahmin or Hindus. Later, on March 13, 1613, and again on January 31st, 1620, laws were enacted to impose a ban on the performance of all Hindu rites and ceremonies, including marriages. Additional demands included that all Hindus were obliged to assemble periodically in churches to be lectured by the priests about the inferiority of their religion. The poor could not be fed, nor ceremonial meals be distributed for the peace of souls of the dead. No rituals could be performed on the 12th day after a person's death or on moonless or full moon days. There could be no fasting on the Ekadashi days. Hindu men could not wear dhotis even in their own homes, and women could not wear cholis. However, Hindus embracing Christianity would be exempt from land taxes for up to 15 years, but no one should bear any Hindu names. A most blatant abuse of power by the clergy was the order that all orphans could be baptized as Christians, which led to the kidnapping of numerous orphans and the establishment of many Christian orphanages. Various regressive measures were also adopted to suppress the knowledge of Vedic Dharma and the culture of Hindus, and to exterminate the indigenous literature in Marathi, Konkani, or any other local dialect. Special officers, known as qualificadores, were appointed to examine the books published by the Hindus before they were printed, and care was taken to see that they contained nothing against the Catholic faith. A list of prohibited Hindu books was maintained. According to the Holy Inquisition manual, it was a crime to possess and read prohibited books. All Sanskrit and Marathi books, whatever may be their subject matter, were seized and burnt on the suspicion that they might deal with what they called idolatry. Such harassment was felt by the Hindus that they abandoned the city in large numbers, refusing to stay in a place where they had no freedom, and were liable to be imprisoned, tortured, or put to death for worshipping according to the ancient tradition. The Hindus of Goa were shocked to see that the god of Christianity was crueler than the god of Islam or the dictates of Prophet Muhammad. Thus, deserting Goa for the lands of the Muslims seemed a brighter future, though they had received nothing but trouble from the Muslims. After all this, an order was issued in June 1684 that eliminated the Konkani language, and for dealing toughly with anyone who still spoke the local language. It was compulsory to speak Portuguese only. All symbols of non-Christian sects were destroyed, and all books in the local languages were burnt. The Archbishop, living on the banks of the Ethora, said in a lecture that the post of inquiry commission in Goa is regarded as holy. Thus, the Indian ladies who opposed or resisted the sexual advances of the assistants of the commission were put behind bars and then forcibly used by them to satisfy their carnal desires. Then they were burnt alive as opponents or heretics of the established tenets of the Catholic Church. So harsh and notorious was the Inquisition in Goa that word of its brutality and horrors reached Lisbon, but nothing was done to stop its increasing barbarity. Those who were fortunate got away with being banished from the Badal, Portuguese Daga, territory. wait. Let's welcome Nikhil and Wesley. Wesley Be says most that welcome. he's from Huntington, something like that, USA. So let's welcome Ji. them and let them comment first, and then we'll go ahead. Sure. Greetings. Hi, everybody. I'm Wesley Lawrence Curry II.
I like them. I'm in Huntington, West Virginia. How is everyone? We are doing well, sir. Thank you very much for joining us, sir. Hello, Wesley. How are you? I'm okay. Welcome, Thank sir. you for letting me on. Welcome. Thank you. It's a pleasure that you are here, sir. Jai Good Shri to Ram. see you here for the first time. Yes, Sri Ram, sir. दादा जय सुन श्री लूंगा राम। आपका? जी दादा जय श्री राम। कंटिन्यू करिए दादा, मैं पढ़ रहा हूँ उसमें ना। ठीक है, चलिए दादा। May I go ahead, sir? Thus, क्यों दादा, चलो आगे। then these ladies were burnt alive as opponents or heretics of the established tenets of the Catholic Church. So harsh and notorious was the Inquisition in Goa that word of its brutality and horrors reached Lisbon, but nothing was done to stop its increasing barbarity. Those who were fortunate got away with being banished from Portuguese territory. The less fortunate had their property seized and auctioned, the money used for furthering the conversion processes of the church, and the least fortunate were brutalized and killed or forced into slave labor in the galleys of the ships that transported loot from India to the Portuguese coffers. The Goa Inquisition is regarded as the most violent ever executed by the Portuguese Catholic Church. It was basically a Holocaust inflicted on the Indian people. The Inquisition consisted of a tribunal headed by a judge sent from Portugal along with 2 assistants or henchmen. The judge was answerable to no one but Lisbon and handed down judgments in whatever way he saw fit. The Inquisition was conducted in a palace called the Big House. This had been the residence of the Portuguese governors of Goa until 1554. This had been refitted to accommodate 200 cells for prisoners and instruments of torture to inflict all kinds of pain on the heathens and pagans, Hindus, and force the true and merciful religion of Christianity on those who resisted it. All interrogations were conducted behind closed doors, but the screams of agony of the men, women, and children could be heard from the streets even in the middle of the night, as they would be brutally flogged, beaten, burned, or even slowly dismembered in front of their relatives. Since the prisoners of the Big House were separated from one another, it took only 4 guards to oversee them. Those who died in the jail were buried there, only to be exhumed later and taken with the prisoners condemned to death to be burnt during the next auto da fe, which was a ritual fire held by the priests to burn all things considered sacrilegious. The prisoners were kept in silence, and anyone who complained or even prayed to God loudly ran the risk of being whipped by the guards. Prisoners were brought in after witnesses had reported on them of crimes they had purportedly committed, often times with the witnesses implicating innocent people while under the threat of torture or to save their own lives. The so-called crimes were often some kind of blasphemy against Christianity or impiety, idolatry, necromancy, and witchcraft, or anything against Christianity. For these crimes, they would often be burnt alive at the stake, but only after much torture. If they confessed to their crimes, they were shown Christian mercy by being killed, first by strangulation and then being burnt after death. These torture sessions were also these torture sessions were also efficiently watched by Christian priests. What verify this history are the recorded orders issued by a succession of Portuguese viceroys and governors, as well as the prosecutors of that time, which give details of the horrors committed in the name of Jesus Christ. Some of the tortures included having your arms tied behind your back and being strung up by your wrists. You would hang there for hours only to be suddenly dropped down near the floor, which would quickly pull your arms back to dislocate them out of the joints. There was also the water torture, in which you are forced to lay down across an iron bar and ingest water
without stopping, causing the iron bar to break one's vertebrae and cause vomiting and asphyxia. Sometimes in that condition, the stomach would be beaten with sticks so badly when filled with water, the stomach itself would burst. Torture by fire was being hung over a fire to be roasted alive with your feet coated with animal fat, which would ignite and burn the feet. All these were done until the victim confessed. Then they would be taken to their cell to suffer until it was time for their execution. Other instruments included a metallic glove in which the hand would be roasted over a fire, and other tools for breaking one's legs and shins, disemboweling a person on the rack, sharp knives for cutting the ears off one's head, or instruments that would tear a woman's breast from her body, and so on. All such being the ways to taste the mercy of Christianity and feel remorse for not having converted. This is from the Atrocities on Hindus by Missionaries in Goa by V. Sundaram. Also, the famous writer of the 19th century, Alexandre Herculano, wrote in his book Fragment about the Inquisition how no one was excused from the tortures of the Inquisition. The terrors inflicted on pregnant women made them abhor neither the beauty nor the decorousness of the flower of youth, nor the old age, so worthy of compassion in a woman, exempted the weaker sex from the brutal ferocity of the supposed defenders of the religion. There were days when 7 or 8 were submitted torture. Paul William Roberts, in The Empire of the Soul, Some Journeys in India, writes about the methods of the Portuguese Inquisition. Children were flogged and slowly dismembered in front of their parents, whose eyelids had been sliced off to make sure they missed nothing. Extremities were amputated carefully so that a person could remain conscious even when all that remained was a torso and a head. Those subjected to other diabolical tortures could also be counted in the thousands, and the abominations continued until a brief respite in 1774. The evil resumed, continuing almost incredibly until 16th of June 1812. At that point, British pressure put an end to terror with the presence of British troops stationed in Goa. Dr. Trasta Brikanka Kunha, a Catholic citizen of Goa, had written, in spite of all the mutilation and concealment of history, it remains an undoubted fact that religious conversion of Goans is due to the methods of force by the Portuguese to establish their rule. As a result of this violence, the character of a people was destroyed. The propagation of the Christian sect in Goa came about not by religious preaching, but through methods of violence and pressure. If any evidence is needed for this fact, we can obtain it through law books, orders, and reports of the local rulers of that time, and also from the most dependable documents of the Christian sect. From all this, we can plainly see that the Goan Inquisition by the Portuguese Catholic Church was nothing less than a sustained war against Hindus and the Vedic culture itself. Nevertheless, they could not see the demise of the Vedic Dharma. Presently, there may be a few references in modern or school history books to the violent and treacherous ways that the Catholics used in their attempt to destroy and triumph over the Vedic tradition of India. And through this silence, and though this silence is maintained by secular historians, the history of it still exists for us all to remember and to honor the lives of all those men, women, and children who, under the threat of torture and death, refused to give up their culture. Just as the Jews say in regard to their own Holocaust, this chapter of Indian history should not be forgotten in order to make sure that it never happens again. And so we do not forget the value of the Vedic traditions and Dharmic culture that adds to the profound history of India and the high caliber of character of its people. Looking back at the history of the Church, the Vatican has apologized for the agony inflicted on Galileo, who was right all along. Thus, we can access that it is time that the Vatican also convey its apology
for the Goan Inquisition. In fact, should they not give some reparation for all of the damage they did and the horrors they inflicted on so many people? Nobody knows exactly how many citizens were killed or tortured by the Portuguese in the name of Christ, but it would be likely to run into hundreds of thousands. After reviewing the amount of cruelty Christians have used to establish their religion or even force it on others in all parts of the world, is there much wonder why some people like Thomas Jefferson, 1743 to 1826, observed millions of innocent men, women, and children since the introduction of Christianity have been burned, tortured, fined, imprisoned. Yet we have not advanced 1 inch towards humanity. What has been the effect of coercion, or why the Irish author Oscar Wilde, 1854 to 1900, commented, "When I think of all the harm the Bible has done, I despair of even writing anything equal to it." Even Mahatma Gandhi wrote in his autobiography, "The story of my experiments with truth." I had started disliking Christianity. This was not without reason. Those days, Christian missionaries used to stand in a corner near the high school in Rajkot and use disgraceful words against the Hindus and their gods and goddesses. I could not bear this. In fact, not only Gandhi, but no self respecting or decent human being can bear to hear about the atrocities committed in the name of Christianity. For anyone to allow, encourage, implement, or condone such cruel and brutal treatment of others is surely a sign of insanity. What kind of religion could this ever be when such violence and cruelty could be allowed or endorsed for its cause, as we find in the Goan Inquisition? And still, the techniques used by the Christians, as observed by Mahatma Gandhi, remain an important method of their preaching and conversion work to this day. Most Indians believe that Goa was settled by Portuguese. This is what the history textbooks have taught them. But the facts are quite different. Goa, Gomantak, was a bustling place settled by Indians continuously from at least 1200 BC. It was a famous pilgrimage, also known as Kashia of the West. Till the Portuguese missionaries came, they launched an aggressive program of converting native Hindus and Muslims to Christianity. Hundreds of Hindu temples were destroyed and Brahmins were chased out. Many converted as a result of this. The new converts were ordered to give up their heathen practices. However, when friendly methods failed to keep the newly converted within the flock, Inquisition was called in. The Goan Inquisition has often been called the worst in the history of Christianity. It continued for about 250 years, from the 1570s till 1812, when the British mercifully put an end to it. Incidentally, the Goans did not take this lying down. According to the World Book Encyclopedia, Goa witnessed 400 revolts in the 400 years of Portuguese occupation. This is from Stephen Knapp, Crimes Against India, Voice of India, 1998. जी दादा, अभी मैं वो एक बुक बोली थी, वो बुक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो जो है उसका लिंक डाल दूंगा, जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ लेगा। जी जी। हाँ, तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई हिंदी ये सुंदरम का आर्टिकल पढ़ो, तो सुंदरम का आर्टिकल, सुंदरम का मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, दिख रहा है? जी जी दिख रहा है सर। शुरू करूं सर? शुभ काम में देरी क्यों, पढ़ो। ये 15th of March 2013. बाद में डिस्कशन करेंगे ना। On 3rd of December, there's a fair of the so-called Saint Francis Xavier at Old Goa. Hindus also go to this fair and pray for curing of physical ailments. Lack of dharma shiksha among Hindus is the reason
why they fall prey to such so-called miracles of the so-called saints. We give below how Xavier and under his order, the Portuguese oppressed Hindus. Saint Francis Xavier landed in Goa on 6th of May 1542 with the resolve of uprooting paganism from the soil of India and planting Christianity in its place. And so all plans of persecution and oppression of the Hindus came along with him. All religious policies and procedures of forcible and fraudulent conversions and demolitions of the Hindu temples and idols were undertaken under his guidance and missionary zeal. Thus, it was Saint Francis Xavier who laid the foundation for the compassionate or barbarous for an organized system of holy inquisition against the Hindus in Goa. Saint Francis Xavier was a pioneer of anti-Brahmanism, which was adopted later as a major plan in the missionary propaganda during the British rule, as is evident below. Lord Minto, the Governor General of India from 1807 to 1812, sent some propaganda material used by the English missionaries in India to the British Parliament, and in particular referred to one Christian tract about which he said, "The remainder of this tract seems to aim principally at a general massacre and extermination of the Brahmins." Wow. We can see what was Saint Francis Xavier's first priority in India through his own words. "I want to free the poor Hindus from the stranglehold of the Brahmins and destroy the places where evil spirits are worshipped. The Brahmins are the most perverse people in the world. They never tell the truth, but think of nothing but how to tell subtle lies and to deceive the simple and ignorant people. They are as perverse and wicked a set as can anywhere be found, and to whom applies the psalm which says, 'From an unholy race and wicked and crafty men, deliver me, Lord.' The poor people do exactly what the Brahmins tell them. If there were no Brahmins in the area, all Hindus would accept conversion to our faith." Saint Francis Xavier wrote a letter to the Society of Jesuits in which he said, "Following the baptisms, the new Christians return to their homes and come back with their wives and families to be in turn also prepared for baptism. After all have been baptized, I order that everywhere the temples of the false gods be pulled down and idols broken. I know not how to describe in words the joy that I feel before the spectacle of pulling down and destroying the idols by the very people who formerly worshipped them." Saint Francis Xavier did this in Quilon after the Hindu Raja of Quilon had given him a munificently large grant of land and other resources to build churches in his territory. After taking this grant, Saint Xavier converted Hindus into Christianity. After doing that, he said that he was in a state of ecstatic joy. The same kind of savage joy was expressed by another equally savage temple destroyer, the Mughal emperor called Aurangzeb, who ruled from 1658 to 1707. So much for terrorist Christianity and terrorist Islam. So much for peace-loving and compassionate Christianity and Islam. So much for Christian brotherhood and Islamic brotherhood. No wonder the great German philosopher Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844 to 1900, not belonging to the VHP or RSS or Sangh Parivar, paid this legitimate tribute to ever compassionate Christianity. "I call Christianity the one great curse of enormous and innermost perversion, the one great instinct of revenge, for which no means are venomous, too underhand, too underground, or too petty. I call it the one immortal blemish of mankind. I'm sure the Pope in Rome will take immediate action to excommunicate Nietzsche posthumously for this above paganish, paganish and heathenish indiscretion, taking the ever-obliging Sonia-directed pro-Catholic UPA government into private confidence. Our Prime Minister has prepared the ground for this drama by his recent statement of the mass Hindu rebellion in Odisha. In these columns yesterday,
I had written about the atrocities committed by Saint Francis Xavier and his disciples against the Hindus in Goa in the 16th century. Aided and guided by frenzied mobs, he and his missionaries did not lag behind the Islamic iconoclastic zeal iconoclastic zeal of Muhammad of Ghazni in the 11th century, Malik of Kafur, and Timur in the 14th century. They destroyed thousands of Hindu temples and non-Christian places of worship in South India in general and Goa in particular. Even before the arrival of Saint Francis Xavier in Goa in 1542, two Portuguese governors called Minguet Vaz and Diago Borba inaugurated the state-sponsored movement for the demolition of the Hindu temples and other vestiges of Hindu religion. Most of the temples of Goa, Divar, Chorada, and Jua region were destroyed in 1540. In 1541, a policy of rigor of mercy was announced as the main plank of anti-Hindu policy to be followed by the government in Goa. In this year, after demolition of temples, various leaders of the Hindu community were terrorized into submission and made to agree of their free volition that the income of the lands belonging to the ancient Hindu temples, which had been destroyed, might be applied to the upkeep of Christian churches and Christian missionaries. It was also resolved that the income should, in future, be applied towards and donated to chapels built in this island, and also to defray the expenses of the co-fraternity of the converts to the faith. As a result of this declared anti-Hindu and Hindu extermination policy, like that of Catholic Sonia-directed UPA surrogate government of India today, the St. Paul's College was established and maintained out of the income of Hindu temples which had been destroyed. After the arrival of Saint Francis in 1542, the movement for temple demolition in Goa was further accelerated, as he was an instigator and a role model for the demolition of Hindu temples. From then on, the Jesuits did their worst under his cruel leadership, using every form of bribery, threat, and torture against the Hindus to effect a conversion. He noticed that though some Hindus baptized earlier through force and fraud were still secretly worshipping these evil spirits. Enraged by this paganish and heathenish barbarism, Saint Francis Xavier reacted strongly with Christian compassion and understanding marked with unsurpassed nobility. According to the history of Christianity in India, his reaction was, when the boys informed him that some had made an idol, he went with them and had it broken into 1,000 pieces. If in spite of this, if in spite of all his divine advice, someone persisted in making idols, he would have them punished by the Patingatis, heads of Parava village, and banished to another village. One day, when he heard that idols had been worshipped in the house of a Christian, he ordered the hut to be burnt down as a warning to others. Source Silva Rego, Volume 1, page 158. Regarding Saint Francis Xavier's way of violent evangelism, Hector has written, in the matter of conversion, Xavier held exceedingly crude ideas. His great aim was to get hold of the younger portion of the population. Xavier is said to have baptized 700,000 natives, whom he left as ignorant as he found them. His motto seems to have been quantity and not quality. P.B. Kunha, a Goan freedom fighter and an eminent writer, has been very critical of Xavier's method of evangelism. To quote his words, that Saint Xavier came as a missionary with the patronage and protection of the Portuguese king and used his power of proselytization, to further the Portuguese imperial designs. In order to promote conversions and create an atmosphere of mental terror, Saint Francis Xavier and his missionaries saw to it that the Hindus were tortured by all possible means, particularly where the evidence against the accused foisted cases for inquisition and conversion through fraud, force, and inducement was incomplete, defective, or conflicting. I have presented above the pictures, photographs of the tools, implements, and other appliances carefully designed
by Saint Francis Xavier and his missionaries for the human and humane conversion of the Hindus of Goa through organized torture, fully backed by the might of the Portuguese state in the 16th century. We can see that they were specifically designed. We can see that there were specifically designed sharp instruments with spikes for cutting the ears of Hindus, for breaking their legs and shins, for disemboweling them over the rack, for breaking their jaws, for tearing their tongues, and finally, there was a specially designed Christian equipment, designed with Christian compassion of rigorous mercy, for tearing apart the female breasts. I acknowledge my debt to Sri Manoj Rakhit, a great Hindutva scholar from Bombay, for helping me with the above rare photographs of the implements and the tools of Christian torture in Goa during the days of the Holy Inquisition. Very unfortunately, thousands of Hindus who were tortured and killed by Saint Francis Xavier and his missionaries have not left behind contemporary records relating to their sufferings, trials, and tribulations. One of the most authentic records relating to the Holy Inquisition in Goa was left behind by a French Jewish doctor called Dellen. About him, the savant Ferdinand Denis Ferdinand Denis wrote, "Many voyagers painted with great energy the torments which the Inquisition of Goa inflicted on its prisoners, but the most minute report, without contradiction, and the most moderate in all respects, was that of a French doctor called Dellen, who wrote a special treatise on this tribunal, of which he was one of the victims. Indeed, a young French doctor by the name of Dellen, 10 years after he escaped from his punishment in the galleys in Lisbon in 1677, wrote the famous book Relation de la Inquisición de Goa, printed in Holland in 1687. The acquisition of Dellen's book was most difficult for more than 200 years because not only it was antique but prohibited. Only Mr. Cunha Rivera in the late 19th century, on the way to serve as secretary to the governor of Goa, was able to get a copy from the curator of the public library in Lisbon, Jofo Jos Barbosa. From Dr. Dellen's classic book referred to above, we get the following details relating to the Holy Inquisition in Goa. The House of Inquisition, divine torments of Hindus, was a subterranean grotto, which so that others might not hear the cries of the wretched. Many a time the Hindu victims died under torture, their bodies were interred within the compound, and the bones were exhumed for the auto da fe and burnt in public. Those Hindus who were branded as convicts and persisted in denying the facts of which they were accused or who were relapsed were obliged to wear another scapulary, which was called samara, a brown cloth on which the portrait of the victim was painted above flames and surrounded by demons. Below this portrait was written down the name of the condemned and the crimes. But for those who accused themselves after the sentence was pronounced and who were not relapsed, a different samara was given. In these brown vests, the flames were facing downwards, which was called Fogo Revolto. After the distribution of the Sambenitos, 5-pointed bonnets or miltres of cardboard, all painted with demons and flames, and the word Felticero, sorcerer, Felticero, sorcerer, were brought and placed on the heads of the persons accused of necromancy. Standing up all night, at last, at 5:30 a.m., the sun rose and the bell of the cathedral started tolling. This was the signal for the population of Goa to wake up and come to witness the august ceremony of the Auto da Fe, which was considered as a triumph of the Holy Office. By daylight, each convict was ordered to march alongside a godfather, one of the officials assigned to each victim. It was a great honor to be appointed godfather for these ceremonies. Finally, covered with shame and confusion, tired of the long march, the condemned reached the church of Saint Francis, which was decked with great pomp and circumstance. The altar was covered with black cloth on which stood
6 silver candle holders. On both sides of the altar, there were two kinds of thrones, the right side for the inquisitor and his counselors, and the left side for the viceroy and his court. The convicts and godfathers were seated on benches. Once the sermon was concluded, two officials went up to the pulpit to read publicly the proceedings of all the guilty and to declare the sentences upon them. Generally, all the Hindu victims were either put to death in all kinds of barbarous ways. Dr. Alfred Demarçay, French commissioner in Portugal and Spain in 1862, on examining the archives of Lisbon, where past processes of inquisition were kept, wrote, "Only the Inquisition has furnished 40,000 proceedings of lawsuits, which are the most precious elements to write the history of this nefarious institution, and an inexhaustible mine for the novelists and authors of melodramas. The Inquisition was the greatest terror of our ancestors in Goa because of its incredible tyranny. It was an independent terrorist republic which did not recognize even the viceroys as their superiors. How immoral and barbarous were the Holy Inquisitors in Goa, which took hourly instructions from Saint Francis Xavier from 1542 to 1551 in the 16th century, can be seen by the oration given by the Archbishop of Evora at the Cathedral Church of Lisbon in June 1897. The Inquisition was an infamous tribunal at all places, but the infamy never reached greater depths, nor was more vile, more black, and more completely determined by mundane interests than at the tribunal of Goa, by irony called the Holy Office. Here the inquisitors went to the length of imprisoning in its jails women who resisted their advances, and having satisfied their bestial instincts there, ordering that they be burnt as heretics. Source: The Hindus and the Portuguese Republic, Priolkar, page 174 to 175. When I think of all the harm the Bible has done, I despair of ever writing anything equal to it. This is a quote from Oscar Wilde, the Irish author. In order to accelerate the process of Christianizing of the Hindus and the demolition of Hindu temples, one of the associates of Saint Francis Xavier, Miguel Vaz, the then Vicar General of India, appointed by the Pope in Rome, requested the King of Portugal, as a part of his 41-point program, to destroy all Hindu temples in October 1546 as follows. Since idolatry is no great and offense against God, as is manifest to all, it is just that your majesty should not permit it within your territories, and an order should be promulgated in Goa to the effect that in the whole island there should not be any temple, public or secret. Contravention thereof should entail grave penalties, that no Hindu should make idols in any form, neither of stone, nor of wood, nor of copper, nor of any other metal, and that persons who are in charge of St. Paul should have the power to search the houses of the Brahmins and other Hindus, in case there exists a presumption or suspicion of the idols there. Consequently, on 8th of March 1547, the King of Portugal ordered his viceroy at Goa that all the Hindu temples should be destroyed forthwith. Miguel Vaz, even before the receipt of this formal order, had commenced the operation of destruction of Hindu temples. Consequently, there was a Hindu uprising, and the Hindus succeeded in poisoning him to death. Following the example of Miguel Vaz, similar orders for destruction of Hindu temples were issued by Viceroy de Antao de Noronha on 29th of August 1556. In March 1569, an order was promulgated by which the income of the Hindu temples of Bardes and Salsette, which had been destroyed by the Jesuits, was transferred to the Christian churches. The Hindu inhabitants of that region were called and asked to disclose, under oath, information about the properties attached to the temples, and upon their due compliance of this order, the entire temple properties were transferred to the churches. Source: A.K. Priolkar, The Goa Inquisition, page number 85. At many places, the temples were destroyed, and churches were built in those places. Thus, we can see that the Jesuit inquisitors in Goa
though only following the path of Muslim marauders like Muhammad of Ghori, Alauddin Khilji, Babur, and Aurangzeb. Baba built his Babri Masjid at the site that became available after his planned destruction of the Sri Ram temple at Ayodhya in 1528. Likewise, the Jesuits of Goa also erected churches on destroyed temple sites in hundreds of places throughout Goa from 1560 to 1812. For example, according to the Imperial Gazetteer of British India, the Church of Kottalim is erected on the same site where formerly the idol of Mangesh was worshipped by the Hindus. Some missionary records refer to the many famous Hindu temples being converted into churches at these places. According to Sitaram Goel, a magnificent Hindu temple in the Elephanta Caves was turned into a chapel. Throughout Portuguese rule in Goa, various viceregal and church council decrees banished the Hindu priests from the Portuguese territories. The public practice of Hindu rites, including marriage rites, was banned. Only Christians were preferred in public employment. The government ensured that the Hindus would not harass those who became Christians. Yet at the same time, and to the contrary, the Hindus were forced to assemble periodically in churches to listen to Christian preaching or to the refutation of the Hindu religion. Perhaps because of all these anti Hindu acts, Mahatma Gandhi wrote very clearly in his autobiography, The Story of My Experiments with Truth. I had started disliking Christianity. This was not without reason. Those days, Christian missionaries used to stand in a corner near the high school in Rajkot and used disgraceful words against Hindus and their gods and goddesses. I could not bear this. In fact, not only Gandhiji, no self-respecting Hindu can bear this. Immediately after the establishment of Portuguese rule in Goa, a number of anti-Hindu laws were enacted, and most of them during the period of Holy Inquisition in Goa from 1560 to 1812. What is worse, all of them were strictly and often ruthlessly implemented to punish the Hindus, more particularly the Brahmins. Now it is finished. Now you can start discussing. No more Yes, sir. presentation. जी सर. दादा मैंने ग्रुप में 2 बुक्स शेयर करी है, उसके कंटेंट जी, भर जी. देख लेते हैं, है ना? अपने प्रियोलकर जी की और बिल्कुल सर. वॉइस ऑफ इंडिया की बुक है वो, और एक बुक और है उसमें. दो बुक है सर. गोवा इंक्विजिशन एक है और हाँ. द टेरेबल ट्राइब्यूनल फॉर द ईस्ट. हाँ, वो एक हिंदी में है, मतलब उसी पे है हाँ, एक्सपेंड. गोवा एवं पूर्वोत्तर भारत में ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार. 2 किताबें हैं सर. ट्रांसफर जय दादा. जय दादा आया है. जी जी जी. सबको प्रणाम. बीबी दादा, एम दादा, सबको अरे प्रणाम. प्रणाम और प्रणाम सर. प्रणाम. कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी. आप बताइए. भाई साहब कैसे हैं? भाई साहब का अभी था, मैं आज गया था हॉस्पिटल उनको मिलने. जी जी. तो अभी उनका ट्रीटमेंट का पता चला कि नवंबर तक चलेगा. जी जी. और उसके बाद देखते हैं क्या क्या कहते हैं डॉक्टर. उनके कुछ हार्ट में फंसा हुआ था कोई प्रोटीन, वो कुछ ट्रीटमेंट जो उनकी कीमो हो रही है वो उसने हार्ट तो क्लियर कर दिया है. जी जी. तो चलो बाकी बैक स्ट्रीट पे नमस्कार. मिलेगा. जी नमस्कार जी. जी जी जी. हाँ, तो ये ज्यादा बस कंटेंट दिखा रहा हूँ मोटा मोटी. जी. ये एक बुक है. नहीं, ये बहुत, हाँ, पिरोलकर का ही किताब है. हाँ, एक ये है. ठीक है, तो इसका कंटेंट जो है मैं सिर्फ कंटेंट दिखा रहा हूँ. इंट्रोडक्शन वगैरह है. द स्पेनिश इंक्विजिशन, द पोर्टुगीज नमस्कार. नमस्कार जी. नमस्कार. नमस्कार रावण जी. Advent of the Inquisition in India, Dalton's account of Inquisition of Goa, a fabrication, conversions from conviction for convenience or by force.
evolution of the policy of religious persecution in India, organization and procedures of Inquisition of Goa, anti-Hindu laws in Goa, use of torture by the Inquisition, and the place and the palace of the Goa Inquisition, the jurisdiction and authority of the Inquisition of Goa. Part 2 में accounts given by the निखिल जी Dallin को and बहुत बहुत धन्यवाद। Bauchanan of the Inquisition. बुकेनन, हाँ, बुकेनन और Buchanan. Buchanan, हाँ. Account given by Dallin and Buchanan of the Inquisition at Goa. Dallin's account of the Inquisition at Goa, Dr. Buchanan's account of the Inquisition at Goa in 1808. हाँ, Buchanan. ठीक है, ये है बस इसका वो है। बाकी जो पढ़ना चाहता है वो उसके लिए जुगाड़ कर देंगे हम अभी। जी जी। क्या नाम है, ये निखिल भाई ने शेयर करी ना, निखिल भाई। जी जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब एक काम और करना, आपको बहुत धन्यवाद सर। कंट्रोल एच मारना और जी, हिस्ट्री में से URL निकाल के और इसमें डाल देना नोट्स में, ठीक है? ठीक है। और ये दादा बहुत आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। आप फाइल्स में सर्च जी, करेंगे तो टेलीग्राम पे आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगी इसमें। और हमें तो आप दे दिए सर, मैं तो पढ़ूंगा इसको। नहीं, क्योंकि ऑडियंस के पास नहीं है तो हम URL नहीं, ऑडियंस को आप बता रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ, ये ऑडियंस के लिए आपको बहुत आसानी से टेलीग्राम एप्लीकेशन में आप डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे, केवल आप गोवा लिखेंगे और गोवा के लिए फाइल सर्च करेंगे तो आपके पास प्रियोलकर जी की ये बुक सामने उपलब्ध हो जाएगी। एक हिंदी में भी थोड़ा इसका संक्षिप्त वर्जन भी है, वो भी मैंने शेयर किया है। तो ये आप गोवा में जो अत्याचार हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, उसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंट है, वहां पर जो अत्याचार हुए हैं वो वर्णन, तो इसमें भी जितना थोड़ा आपको मिल जाएगा इसमें, और आपको सीखने में मिलेगा कि आगे ऐसा ना हो, उसके लिए हम अपना संविधान के हिसाब से सभी से प्रार्थना करें। जी जी जी। नमस्कार सबको नमस्कार जी। हाँ जी, आपको भी नमस्कार जी। नमस्कार रावण जी। ओ जय साहब, किधर है आप? मैं दिल्ली में हूँ। रावण दादा नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। अच्छा, अभी मेरा बात सुनो। भारत में ना विदेशी ताकत ने सबसे लॉन्ग टाइम में जो सरकार चलाया या हुकूमत चलाया या भारत को कब्जा करके हुकूमत चलाया, यही लोग है। 450 साल पोर्चुगल ने भारत के ऊपर हुकूमत किया, यानी गोवा और रिलेटेड प्लेस में। बाकी जितना भी है वो लोग इतना लॉन्ग टाइम में भारत को कभी कब्जा के हुकूमत नहीं चलाया था। ये पोर्चुगीज है, 450 इयर्स ये लोगों ने गोवा को रूल किया था। अच्छा एम साहब, दूसरा एक इंफॉर्मेशन देखो, ये लोग गोवा से जब पोर्चुगीज जाता था ना शिप में, जी जी जी, तो ये ओडिशा में वो जो मंदिर है देखो, एक सूर्य भगवान का मंदिर, कोणार्क टेम्पल, हाँ, उधर एक मैग्नेट था जिसका वेट है 50 टन का एक मैग्नेट था वो मंदिर के अंदर। वो मैग्नेट का बैलेंसिंग से उधर एक मूर्ति या कोई चीज हवा में रहता था वो मंदिर के अंदर। सूर्य मूर्ति, सूर्य भगवान का मूर्ति। हाँ, जब ये लोग गोवा से पोर्चुगीज आना जाना इनका शिप में होता था ना, तो वो जगह में जब आता तो इनका शिप को थोड़ा खींचता था। उनका कंपास भी बिगड़ जाता था, ये बात सुना मैं। हाँ, तो उसके बाद में एक बार ये लोगों ने ये क्यों होता है करके इसको आइडेंटिफाई करने के बाद वो शिप को ये लोगों ने किनारा किया, फिर नीचे उतर के देखा, फिर वो फॉलो करके आया, वो लोगों ने वो मैग्नेट को चुराया बोलते वो मंदिर में से। नहीं, मंदिर तो पूरा सील्ड है, आप गए होंगे वहां तो देखे होंगे, पूरा नहीं मैग्नेट किधर है? नहीं, मैग्नेट तो है ही नहीं, मतलब मंदिर भी टूटा हुआ है। नहीं, यही बोल रहा हूँ। नहीं एम सब मेरे बात को आप समझने को प्रयास करो ना। मैं समझ गया। वो मैग्नेट वो लोगों ने लेके गया और वही उनके वजह से
प्रोबेबली अभी वो हम भारतवासी अभी नहीं देख सकते वो क्या क्या था उधर, वो मैग्नेट का क्या कमाल था, क्या था नहीं, करके। हाँ, चारों तरफ से मंदिर सील्ड इसलिए है कि वो गिर जाएगा, नहीं तो मतलब इस तरह सील कर दिया गया है कि स्ट्रक्चर जितना बचा हुआ है उतना रहे। तो आप वो कभी लोग जाओगे काम देखोगे। काम होगा ना, ये लोग ने वो मैग्नेट को निकालने के लिए ही डिस्ट्रॉय किया होगा ना बहुत सा कुछ। जी जी, वो मैग्नेट को निकालने के लिए वो लोग ने कुछ किया होगा। अभी भी उधर जाके देखो, मैं क्योंकि वो मैं तो 2-3 बहुत। दफे गया हूँ, तो वहाँ लोकल लोग तो बोलते हैं कि मैग्नेट था, वैसा सूर्य अच्छा, भगवान का स्टैच्यू था, दूसरा ऊपर भी फ्लोट करता था। नेक्स्ट टाइम में, अभी हमारा ये सुनने वाला में से कोई भी अगर नेक्स्ट टाइम में उधर विजिट करेगा ना, देखना उधर किनारे पे वो टाइम का बनाया हुआ बड़ा बड़ा स्टील का रॉड सब पड़ा है। ताजुब होएगा वो सब हम लोग देखेगा तो, बड़ा बड़ा स्टील का रॉड जिसका राउंड होएगा 6 इंच। वीडियो में ऐसा लगता है 6 इंच का राउंड होएगा, यानी वो इतना मोटा होएगा, 6 इंच मोटा, 8 इंच मोटा, बड़ा बड़ा स्टील का सॉलिड रॉड पड़ा है। वो सब वो मंदिर के इसका था, यानी उनका ही पार्ट्स है वो सब। अच्छा, दूसरा बात क्या है मालूम है आपको, मैं बताता हूँ। ये भारत के अंदर दूसरा लोग भी थोड़ा टाइम के लिए शायर करके, स्पेशली केरल साइड में भी ये यूरोपियंस था। एक डच इंडियन कंपनी भी हमारे उधर काम करता था, मालूम है। यहाँ भी था चिंसुड़ा में, ये कलकत्ता के पास। हाँ, उनका तो अभी भी सब, अभी भी चर्च है वहाँ। डच तो कहने का गवर्नर का मतलब ये हुआ, बंगलो है। लोगों को मालूम है सिर्फ ब्रिटिश के बारे में। एक्चुअली भारत में कब्जा करने के लिए ब्रिटिश भी आयल है, पोर्चुगीज भी आयल है, डच भी आयल है, मुझे लगता डेन्स है भी आया, इतना है। डेनमार्क से डेन्स भी आया था, डेन्स। तो मैं यही डेनिश। इसलिए मैं बोला ना, नहीं नहीं, मैं इसलिए डच बोला, उनको डच बोलते हैं। नहीं, डेन अलग है, डेनमार्क के नहीं हैं, नहीं नहीं अलग नहीं है। नहीं डच तो नहीं 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 हॉलैंड के नहीं हैं, नहीं नहीं डच नहीं नहीं हॉलैंड नहीं के हैं। एम मैं सब बोल मेरे रहा हूँ बात कि आप सुनो। हाँ, डच डच जो है ना, डच और वो हॉलैंड, हॉलैंड के हैं, नीदरलैंड और डेन्स सेम है थिंग। डेनमार्क के। डच, हॉलैंड, नीदरलैंड उनका एक ही है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं हाँ, आफ्टर यस यस कंप्लीटिंग यस, एम सब आप सही बोल रहे हैं। मैं थोड़ा इधर कंफ्यूजन हो गया। डच और नेदरलैंड्स वो एक है। नहीं, हाँ हाँ, वो एक ही है, हॉलैंड और हाँ, नेदरलैंड्स एक ही है, क्योंकि वो समुद्र के मतलब जी 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 सी लेवल जी के जी, नीचे बना हुआ है, आप डाइक्स है राइट वहाँ चारों तरफ। राइट राइट ये राइट। ये हॉलैंड के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा जानता हूँ, मैं 2 साल करीब फिलिप्स के साथ एसोसिएटेड था, तो उनका जी 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 जी, हेडक्वार्टर आइंडहोवन हॉलैंड में है। हॉलैंड में, और हॉलैंड का ऑफिशियल नाम नेदरलैंड्स है। हम्म। अच्छा, दूसरा ये गोवा में जब पोर्चुगीज जब था ना, वो लोग ने अभी तो आप लोग पढ़ रहा था उसमें एक दो पॉइंट मैं सुना था। जैसे कि उधर का हिंदू जो है जब चावल बनाता है जी तो बनाने का टाइम में थोड़ा सा नमक डालता है, ठीक है। जी तो जी, हाँ, इसी तरह छोटा छोटा पॉइंट को भी ये लोग ने इंस्ट्रक्शन करके नोट रखा किया। था, हाँ, क्रिश्चियनों को, कि जो भी हिंदू करता है उसका उल्टा तुम करने का। इसीलिए अभी भी, क्योंकि मैं गोवनिस के साथ उधर काम किया है मिडिल ईस्ट में, वो लोग जी गोवा का जो हिंदू है वो चावल में नमक डालेगा, क्रिश्चियन जो है वो चावल में नहीं नमक न डालेगा। डालता। हाँ, और चावल में नमक कभी डालते मालूम है, पकने के बाद टेबल में लाके जब प्लेट में खाने का टाइम में थोड़ा सा उसमें स्प्रे करते हैं। जी अच्छा, जी दूसरा भी एक बात वो मेरे को उधर के एक हिंदू ने बोला, ये बात बोलते हैं, ये हमारे केरल में अभी भी, मेरे घर में भी ये प्रचलन अभी भी है, ये कस्टम। तुलसी जो है ना, घर का सामने तुलसी पालता है जी हिंदू। जी तो गोवा में भी वो टाइम में हर एक हिंदू के घर का सामने तुलसी होता था। तो जी वो भी ये लोग ने एक कानून निकाला था, कोई भी घर का सामने तुलसी नहीं पालने का, समझा। जी। बोलते इतना तादाद में गोवा वो के अंदर वो टाइम में तुलसी को ये लोग ने डिस्ट्रॉय किया, बोलते हैं अभी गोवा में वो हम लोग तुलसी पढ़े, नहीं के बराबर। अभी हम लोग पढ़े कोकोनट ट्री, नारियल का मतलब झाड़ और तुलसी हम लोग उखाड़ हाँ, उखाड़ के फेंक देता था। जी 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 अरे जी। एम दादा,
अवगढ़ सिंह आ गया। अच्छा, मैं कहा मैं ड्रॉप करता हूँ, अवगढ़ सिंह आ जाए। मैं कल की स्ट्रीम में जुड़ता हूँ, मेरे को बहुत नींद आ रही है, 2 दिन हो गए, मेरा अभी साइकिल सेट नहीं हो रही। मैं आपका आवाज से मालूम पड़ जाता है। हाँ, मैं कल जो है ना जी दादा बिल्कुल नहीं, फिर रेस्ट कीजिए आप। ये हाँ, मेंटली मैं भी कल आप जुड़ूंगा। टायर्ड हो, ये जेट फिजिकली पैक भी में फंसे टायर्ड। हुए हैं, जेट लैग में फंसे हुए हैं ये। अरे नहीं, मेरी फिर भाई फ्लाइट का साहब मैं को आपको देख बताता रहे हूँ, मैं गया कैसे। मैं गया एल्बुकर्की से सैन फ्रांसिस्को, 9 बजे पहुंचा, रात को होटल में चेक इन किया। सुबह जेट ब्लू की फ्लाइट थी, सुबह 6 बजे, तो 2 बजे का अलार्म लगाया क्योंकि 3:15 की टैक्सी मंगाई हुई थी। 3:30 पहुंचे, 4 बजे का काउंट हो गया, तो 5.5 घंटे की फ्लाइट है, 5 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट है से सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क की। तो फिर 6 घंटे लेओवर न्यूयॉर्क JFK में, और बाकी फिर 14 घंटे की फ्लाइट डायरेक्ट। तो ये हाल हुआ। 14 घंटा का डायरेक्ट फ्लाइट था। हाँ, कौन सा फ्लाइट? एयरवाइज? यूनाइटेड। दो, एक आती है अमेरिकन और एक आती है यूनाइटेड, तो मैं दोनों से नहीं, ये आता हूँ। 14 घंटा नॉन स्टॉप कौन सा एयर सर्विस था? अरे है अमेरिकन भाई, यूनाइटेड एयरलाइंस। है। मैं भी तो आया हूँ दिल्ली से 14 घंटे में। भाई कोई तो बोलो, एयरवाइज कौन सा था? अरे यही तो। यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस दोनों हैं दिल्ली से। अच्छा, रावण जी, अमेरिका की 2 एयरलाइंस है, पहली का नाम है अमेरिकन एयरलाइंस, दूसरी है यूनाइटेड, सिर्फ यूनाइटेड। हाँ। नहीं, हाँ, ये बात 2। क्या हो रहा था, जब भी आप कुछ बोलते हैं उस वक्त सिंह साहब का आवाज आ रहा था, तो इसलिए अच्छा, इधर तक पहुंचने में आवाज क्लियर नहीं हो रहा था क्या। क्यों, मुझे ये जानकारी जमा करने का बहुत शौक है बचपना से। जो भी ओके। छोटा मोटा जानकारी जब मिलेगा ना, उधर ही फीड करते मैं। ठीक क्योंकि है। ये सब जो रिकॉर्ड है ना, हमारा एयर इंडिया से लिया। आपको मालूम है, एक टाइम में पूरे विश्व में, कल ही मैं ही बोला था, पूरे विश्व में सबसे लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइंग करता था हमारा जंबो जेट, हमारा एयर इंडिया का जंबो। अरे रावण जी, आपने एयर इंडिया का नाम लिया, तीसरी एयरलाइंस है एयर इंडिया, वो भी सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क से डायरेक्ट आती है, बॉम्बे भी जाती है और दिल्ली भी आती है। तो मेरे ध्यान में 3 एयरलाइंस है इंडिया के लिए, अमेरिकन, यूनाइटेड, एयर इंडिया। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। वंस अपॉन टाइम इंडिया का प्ले हमारा एयर इंडिया ही था इतना लॉन्ग के लिए, दूसरा कोई भी नहीं था। अच्छा अच्छा, आज से, ओके। हाँ, आज से 20 साल 25 साल पहले तो ओके। ऐसा भी है। दादा ये सिंगापुर। पुरानी बुक बड़ी महंगी है, $1200 की, $2200 की। जय भारती साहब, प्रेम जी शिकायत कर रहे हैं, आपने फोन नहीं किया उनको। अरे मैं अभी मंडे वो भारत में जाएगा ना, कोई भी आदमी विदेश से भारत में जब जाते हैं तो ऐसे होता है। अभी बीच में हमारे डॉक्टर साहब भी 1 हफ्ता या इधर रह के आया दिल्ली में। वो मुझे भी कुछ नहीं बोला, इसराइल में आने के बाद मेरे को बोलते हैं मैं दिल्ली होके आया करके। अच्छा एम साहब, आपने ये जो अभी ये गोवा का इंक्विजिशन का ये किया ना, उसमें दूसरा एक कॉमेडी जी। बात क्या मालूम है? दो कॉमेडी बात। एक तो वो जो फ्रांसिस सेवियर, उसका बहुत बड़ा एक मॉन्यूमेंटल है उधर। उधर श्रद्धालु जो आता है, मुझे तो लगता है उसमें 75% अभी भी गोवानीज हिंदू है डेली। बासिलिका बॉम जीसस मालूम है मुझे, वहाँ उनका बॉडी भी प्रिजर्व्ड है, मतलब उधर 70 प्रिजर्व है, उधर 70% यानी 70%। पैर का एक उंगली नहीं है, कोई लेडी मतलब काट दी थी पैर, ये भी हाथ से मैं काट देखा कर उधर मुंह अजीब में वगैरह। लास्ट केस में रखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरा क्या मालूम है? एक बात, दूसरा एक बात मैं देखा, गोवा का कैपिटल नाम है पनाची। पनाजी में आप जाएगा तो आपको वो मालूम पड़ेगा, जैसे कि आपका कलकत्ता में भी मुझे लगता है ऐसा है, और बॉम्बे में है, सिंह साहब को भी मालूम है। ब्रिटिश का टाइम का बनाया हुआ छोटा छोटा घर, जमीन समेत, थोड़ा बहुत जमीन भी होगा, जैसे केरल में सब घर कैसा ऐसा,
जमीन होएगा, कंपाउंड होएगा, फिर उसका अंदर घर बनाया हुआ है ब्रिटिश का टाइम का। बिल्कुल। हाँ, तो गोवा का जो कैपिटल पनाजी में भी मैं ऐसा कुछ घर देखा। तो मेरा जो उधर का कोलिग था उसको मैं पूछा, भाई साहब ये क्या चक्कर है, ये हमारा केरला का मुझे याद दिला रहा है। बोलते है ये तुम्हारा, वो क्रिश्चियन आदमी था गोवा का, बोलता है ये तुम्हारे हिंदू लोग है इसके अंदर। मैं बोला वो कैसा है? गोवानीज हिंदू है, यानी जेन्युइन जो हिंदू है। तो ये राजा राम, लेट मी कंप्लीट प्लीज। जी जी जी। वो देखा आपने बोलने में मेरा ये हो गया अभी। वो रॉय, क्या नाम था वो रॉय का, संस्कृत को सत्यानाश करने वाला? हाँ, राजा राम मोहन। हाँ, राजा राम मोहन रॉय का टाइप गोवा के अंदर भी पोर्चुगीज को मदद करने के लिए कुछ हिंदू थे। वो बड़ा बड़ा जात का था, वो लोग बड़ा जात का, समझा? तो वो लोग भी ऐसा चमचागिरी करता था, यानी हिंदू किधर छुपा हुआ है, या जो ब्राह्मण जो इनको स्पेशल इनको चाहिए वो किधर छुपा हुआ है। तो ये भी स्वयं ब्राह्मण है ये चमचा भी। तो ऐसा पोर्चुगीज ने भी ऐसा पालतुओं को पाल के रखा था, और उनका मिनिस्ट्री में ये लोगों को अच्छा अच्छा पदवी में रखा था। और इनको जिधर गोवा के अंदर जमीन मांगते, घर मांगते, वो पोर्चुगीज अपना फंड से इनको बना के दिया। तो उनका अभी भी वो निशानी उधर है, अभी भी वो ऐसा घर के अंदर अभी भी उनका 4th या 5th जनरेशन रह रहे उधर। ये भी मैं कम से कम 10 घर को मैं उधर चिन्ह किया, हिंदू है बोलते इसके अंदर, ब्राह्मण गोवानीज, ये सब पोर्चुगीज का चमचा था बोलते पानाजी सिटी के अंदर। जी जी। तो प्रेम जी का मैंने अभी वो मैसेज पढ़ा कि सैन फ्रांसिस्को में, मेरे को तो पता नहीं कि प्रेम जी सैन फ्रांसिस्को में आजकल, पता होता तो मैं जरूर। प्रेम जी मैं सिर्फ 3-4 घंटे के लिए था, बस चेक इन किया, 3-4 घंटे सोए और फिर हम 3-3:15 बजे तक निकल गए थे प्रेम वहाँ जी भी से। 1-2 दिन में आ रहे हैं वापस। अरे नहीं, मुझे पता होता तो मैं होटल से करता फोन इनको कि ही इज इन सैन फ्रांसिस्को। चलो नेक्स्ट टाइम। वो गोरे का आया था कमेंट करने के लिए, एम साहब ने मौका नहीं दिया उसको। हाँ, जो कोई भी जो है एंटर करने की कोशिश कर रहा है, अब जगह खाली है, आ सकते हो। मैं बीच नहीं में दिया, गोरा आया था ना, मैं तो कुछ गलत तो कुछ बोला नहीं, उनको वेलकम किया मैं कहाँ कुछ बोला। नहीं, आप उसको पूछने का था कि आपको कुछ कमेंट करने करके पूछने का था, वो उसका इंतजार में था वो। अरे जो बोलने वाला अपने आप बोलेगा। नहीं ना, सब लोग ऐसा नहीं ना यार, स्पेशली हम लोग का बीच में कोई गोरा आएगा तो वो थोड़ी ऐसा अप्रोच करेगा। जब आया तब वो सोच कर ही आया होगा ना कुछ। वो सोचा भी होगा कि हो सकता है आप उसको तो पूछेगा वेलकम उसको। किया मैं, अच्छा बात बोला। निखिल जी कुछ गलत बोला था मैं उनको? निखिल जी नहीं नहीं, कोई गलत नहीं बोला। सब अच्छा। मैं उनको गलत कुछ बोला था कि वेस्ली नहीं, साहब गलत आए थे? नहीं बोला। मेरा कहने का मतलब ये हुआ है तो उसको पूछने का कि आपको कुछ कमेंट करना है करके पूछने का। वो ऐसा कह रहे हैं शिष्टाचार में हमको ऐसा आग्रह रह गया हमें। हाँ हाँ जी हाँ, जितना भी ये जेनोसाइड हुआ है। प्रदीप भाई, हाँ, अगर हम अपन दर्शकों के लिए कुछ नहीं है तो फिर अपना इसको वाइंड अप कर लेते हैं और पीछे बात हो तो अच्छा है। करते हैं। अगर एक कमेंट देना चाहें तो एक कमेंट इसके रिगार्डिंग दे सकते हैं, स्ट्रीम से रिगार्डिंग। नीचे से चालू हो जाओ। अवगढ़ भाई। अरे बहुत हो गया यार, क्या कमेंट दोगे? आप तो देख रहे हो कि जिसको नहीं किस मिला तरह हिंदुओं को खत्म किया गया हुआ है। हेलो, क्या कमेंट देना? मेरी आवाज आ रही है सबको? जिनको आप पूछते हो सेंट फ्रांसिस जेवियर को कितने जी, आ बड़े रही है। सेंट थे, ये सिंह साहब को मैं पहले ही बताया था, जब स्ट्रीम होने के पहले ही मैं जानता हूँ इनका हिस्ट्री। क्या बताऊं मैं, जो पढ़कर सुना है उसे तो साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह वही को शुरू नमस्कार। करवाए थे। नमस्कार जी। हाँ अवगढ़ भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सारे अब्राहमिक कल्ट एक ही जैसे हैं
और मैं तो इनकी तरफ देखता हूँ ना तो पूरा मोमिनों की तरह हरकत करने का मन होता है, थूकने का मन, जैसे चर्च दिख जाए, मस्जिद दिख जाए, मजार पर रोक लेता हूँ। घर की ऐसी टीचिंग्स रहती हैं, घर वालों की छोड़ो जाने दो। ये लोग अभी मणिपुर में यही कर रहे हैं पूरा फंडिंग के द्वारा। और आप ट्राइबल्स एरियाज में देख लीजिए, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ हो गया और एमपी हो गया और झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है सिमडेगा, वहाँ पे लगभग 55% ईसाई मिशनरियों ने क्रिश्चियन बना दिया है ट्राइबल्स को। तो ये सब अरे अफगर सिंह, इन क्रिश्चियन से एक बात पूछना, ये खासकर जो अपना गोरे हैं, कि इन्होंने मैक्सिको में, गाटेमाला में, जहाँ जहाँ भी इन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाई है, क्या वो कंट्री प्रगति कर पाई? डिड दे प्रोग्रेस? जो इनका क्रिश्चियन मॉडल है मॉडर्निज्म का, आज भी वहाँ से इतना लोग क्रॉस कर रहा है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। तो इनका ये है ना कि ये तो इनसे बस यही पूछना कि आप इस मॉडल को कहीं दिखा दो। वेस्टर्न वर्ल्ड आप लोगों ने, जब आप क्रिश्चियन बने हो और आप जहाँ जहाँ गए हो, जहाँ जहाँ आपने नेटिव्स को अपने धर्म में जैसे भी बाय हुक और क्रोक लालच देके, क्या आज वो दूसरा कनाडा, अमेरिका, जर्मनी बन पाया? नहीं, टोटल फेलियर है। जब आप किसी को ये कहते हो कि अगर आप ईसाई नहीं हो तो आप में आत्मा ही नहीं है, इससे बड़ी जालिम बात हो ही नहीं सकती। डायबॉलिकल, क्रूअल, इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं। और ये जिसकी बात देखा वही। हाँ, और ये जिसकी बात करते हैं ना कि वो संडे को खड़ा हो गया, वो हजरत बल कश्मीर में दफन है, लिखा हुआ है, उसके पैरों के निशान है वहां पर, जो नीचे कीले खुड़ी थी। पॉल विलिस की सुनो, जो ऑस्ट्रेलियन बंदा है, उसकी 4 सीरीज की वो है, खोले हैं कि सारी जो इनका धर्म है, विच ब्लू आउट ऑफ द वाटर। तो हाँ, आपने लिंक दिया था, मैंने देखे उसके कई सारे। प्रदीप एक मिनट, प्रदीप हाँ प्रदीप, मैं और तेजवीर दोनों के दोनों हम निकल लेते हैं, अगर तुमको निकलना है। somebody is trying, अंदर आने के चक्कर में कोई हाँ, अफगर भाई बैक निकल स्टेज में एंट्री मारना, तेजवीर भाई बैक स्टेज में एंट्री मारना, ठीक है? हम भी निकल लेते हैं। हाँ, मेरे को निकाल दे अपना। आप बैठो ना यहाँ पर, कुछ भी दादा, मैं मुझे निकल जाता हूँ। हम लोग यूट्यूब में सुनते हैं, आप लोग नहीं, जय दादा को भी रखते हैं। जय दादा 4-5 मिनट में तो मैं रैप अप कर दूंगा, कोई बात नहीं। चलो मैं देखता हूँ कौन आ रहा है जरा। जी, जय भारती जी, आप इंडिया में है ना? हाँ हाँ, तो रोज आम खाइए, आम। हाँ जी, 2 दिन हो गए आप खा रहे हैं। हाँ, अब जो वैसे कोई भी एंटर होना चाहता है वो एंटर हो सकता है। एक स्पॉट बना दिया गया है। अरे आज करेले की सब्जी खाई, बहन ने आज करेले की सब्जी बनाई, क्या बड़े मुद्दे हो गया करेले की सब्जी खाए हुए। जी जय दादा, अब जो आप अभी बात कर रहे थे, वो इसका आप सिंपल एग्जांपल ले लो। एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके हेड ऑफिसेज हैं, ठीक है? वो मल्टी नेशनल कंपनी जो है, उसका जहां हेडक्वार्टर होगा बस उसको बेनिफिट करेगा वो। बाकी जिस जगह उसने यूनिट खोली वहां कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। और पता उस यूनिट का क्या होता है कि जिस देश में जाके ये अपनी चर्च खोलते हैं ना, वहाँ को उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, और जो उनकी जो कलेक्शन होता है उसका मुझे पता नहीं 1/10 या 1/3 वेटिकन को जाता है, सब जगह से। ये है इनका पिरामिड मॉडल। हाँ, बिजनेस मॉडल है। हाँ, हमारा जब मंदिर के खुलता है ना, उसका पैसा किसी को नहीं जाता, कहीं वाराणसी में या योगी जी के अकाउंट में नहीं आता। तो एक नए जो है हमारे पैनल में आए हैं मेंबर, तो कयोस थ्योरी जी, वेलकम। और क्या कहना चाहेंगे आज के? नहीं, मैं बहुत पुराना हूँ सर। मैं वीबी सिंह साहब है क्या? मैं बहुत पुराना हूँ यार मैं नया नहीं हूँ भाई, बहुत पुराना हूँ मैं। अच्छा, कोराम नाम से आता हूँ मैं, वो नाम से आता था मैं, अभी केओस थियरी नाम से आया हूँ। एडवोकेट साहब तो अच्छे जानते हैं। जी सर। ओके जी, तो आज का जो ये स्ट्रीम है, हिंदू, ज्यू एंड मुस्लिम जेनोसाइड इन गोवा बाय पोर्टुगीज,
इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर तो आप लोग बात तो कर लिए होंगे, जो भी है फैक्ट तो आप लोग रखे होंगे, तो इस पर मैं क्या करूंगा। मैंने देखा नहीं है स्ट्रीम, अभी ज्वाइन किया है मैंने पूरी स्ट्रीम देखा नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, आप वो देखने के बाद वो कर सकते हैं। अगर कोई और कमेंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं पहले बता रहा था कि दुनिया भर में ना जितनी भी एरेबल लैंड जिसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारा पानी हो, बहुत सारी लोगों को सपोर्ट कर सके जो लैंड, वो इंडिया में नंबर 1 होती थी। इंडिया दुनिया में कोलंबस से पहले 1500 एडी 1500 में, आज 2023 चल रहा है, 523 साल पहले, 525 साल पहले मान लो, कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा, तो धीरे धीरे पता लगा कि अमेरिका नंबर 1 हो गया पानी की वजह से। पर यहाँ पे मौसम वैसा नहीं है इंडिया की तरह। जो एरेबल लैंड है इंडिया दुनिया भर में सबसे नंबर 1 है अभी भी, सारा साल रहती है, अमेरिका सारा साल नहीं रहता। इस वजह से सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के कंट्रीज जितने भी हैं, वो शहद की मक्खी, जिस तरह मक्खियाँ आती है ना शहद पे, उनके लिए इंडिया, भारत एक शहद है। और सोचेंगे नहीं आप, अब जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि कैलकाटा में कितने, और इधर चेन्नई मद्रास में फ्रेंच, इस तरफ पोर्चुगीज, उस तरफ बेल्जियम, उस तरफ इंग्लैंड, इस तरफ फलाना, हर कोई आदमी, उससे पहले मुसलमान, उससे पहले अलेक्जेंडर भी, अगर मैंने इंडिया को मैंने अगर जीत लिया तो मैंने सारी दुनिया जीत ली, उसका ये गोल था। उसी ने ही इंडिया का नाम इंडिया रखा, भारत का नाम दादा इंडिया देखिए, नहीं रखा। मोटो ऑफ द स्टोरी यहाँ ये आ रहा है कि जिस चीज को ये चाहते थे कि ये ताज है, उसको इन्होंने यूज करने के चक्कर में चप्पल बना दिया। राइट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा भारत जो है ना, वो इतना प्रेशियस है, वो इतना ज्यादा हमारे लिए हम उतनी वैल्यू नहीं हम देते जितना होना चाहिए। दुनिया भर में 6 बिलियन 7 बिलियन लोग हैं, ठीक है, उसमें से 1.5 बिलियन लोग इंडिया में रहते हैं। हमारी भारत की जो जमीन है 25% से लेकर 33% तक लोगों को सस्टेन कर रही है, इतना पानी, इतनी जमीन है। तो हम उससे इतनी वैल्यू नहीं दे रहे अभी। हमें वैल्यू किसी और चीज़ों की है, और हमें इस बात सोचना चाहिए। और द थिंग इज कि जो ये गोवा इंक्विजिशन हुआ, इन्होंने हर जगह पे किया। दादा जो इन्होंने कन्वर्ट कर लिए हैं, इनको लेके कौन जाएगा? इनको दोबारा लेके वापस ले लेंगे। या तो पोर्टुगीज तुम आए थे ना, लेके जाओ इनको, हमारे पास है। देखिए प्रदीप, देखिए, मुझे इंडिया की सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है? हमारे घर के अंदर जो मंदिर होता है, वहां पे भगवान राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, 4 मूर्तियां और हैं, और साथ में हमने जीसस क्राइस्ट की मूर्ति भी रख दी है। दादा वो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति करती क्या है, धीरे धीरे इनको खिसका देती है, गिरा देती है। वही तो नहीं है। एक मिनट प्रदीप, हाँ साहब, ये क्या नाम रखा हुआ है आपने? इसको नाम को थोड़ा सा बदलोगे, गलत लग रहा है। केवल थ्योरी जो है ना, वो लोग बात प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते आपका। नहीं, उससे पहले भी नाम था, वो भी बड़ा खराब नाम था, कोराम साहब का। वो तो तुफैल चतुर्वेदी ने रखा था, वो तो कोराम तो उन्होंने स्वयं रखा था ना। कोराम साहब आपने रखा था ना कोराम? चलो अब थोड़ी देर दादा लोगों को आराम देते हैं, छोटों को बोलने की बारी नहीं मिलेगी, इसलिए इनको दे रहा हूँ मैं बारी। नवीन भाई, एक मिनट, दादा खोल तो लो उसको, बिना खोले बोलोगे। दादा म्यूट है। बोलिए आप इस बारे में, गोवा के बारे में। आपके जैसे नॉलेजेबल आदमी से हमको चाहिए कुछ ना कुछ। सर आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं उल्टा सुनता हूँ बैठ के। आप पूरा दिग्गज चैनल है। नहीं सर, आप इसके बारे में जितना भी जानते हैं उतना तो बोलिए कम से कम। नहीं सर, मैं देखूंगा स्ट्रीम, फिर और कुछ जानूंगा और थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा। जानते तो सभी लोग हैं भाई इसके बारे में, वो क्या रिपीट करेंगे, जानते तो सभी है। मैं थोड़ा आप लोगों से सुन लेता हूँ। आपसे एक सवाल कर रहा हूँ
कि जब सारे के सारे इलाके में पूरे इलाके में ये जो मतलब इस्लामिक रूलर थे, विजयनगर किंगडम में बहमानी किंगडम आ गया था और बाकी जगह पे औरंगजेब आ गए थे, उसके पास जहांगीर थे, तो ये सब वहां पर कैसे चल रहा था, थोड़ा इसके बारे में कमेंट करो ना। जी सर इसके बारे में मैं क्या बोलूंगा सर, आप ही लोग बताइए सर। मैं सिर्फ सुनूंगा, आज मैं जरा थोड़ा सुनता हूँ आज बैठ के। इसलिए शुरू होने से पहले ही मैंने सवाल उठाया था कि वो क्या कर रहे थे, मतलब वर दे सपोर्टिंग, ये क्या प्रॉब्लम क्या था उसका, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी किसी को अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो बता दो भाई। दादा सिस्टर रिलीजन है, अब्राहमिक दोनों तीनों हैं, तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होती। तीसरे वाले को तो ये ऐसी तैसी कर देते हैं ज्यूज की, ये दोनों भाई बहन बन के रहते हैं। दादा म्यूट हैं। प्रेम जी भी आ रहे हैं, बोलता है मैं निकलता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। नवीन भाई तब तक फटाफट कमेंट मारो। नवीन भाई हो या मैं निखिल भाई की तरफ बढ़ूं? नहीं बताइए। नमस्कार जी। हाँ, आज के बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं लोगों से पूछना चाहूंगा आज, क्योंकि ये पुराना थोड़ा मैटर है। हाँ, आज का मैटर के बारे में मैंने एक मूवी देखी थी अमिताभ बच्चन की 1969 का 7 इंडियंस। जब गोवा फ्री हुआ था पोर्टुगीज से, तो 1966 या 67 में 2-3 साल के बाद ये मूवी बनी थी। उसमें इन एट्रोसिटीज के बारे में दिखाया गया था कि कैसे ये जब गोवा फ्री हुआ था उससे पहले एक दंगा हुआ था वहां पे, और उसमें 3 पोर्टुगीज, आई थिंक 3 की 2 मारे गए थे। तो पोर्टुगीज ने क्लेम किया था, जैसे इंडिया फ्री हुआ था ब्रिटिश रूल से, तो ब्रिटिश ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बताई थी। तो इसको देखते हुए पोर्टुगीज जो थे गोवा को अपनी कॉलोनी कभी नहीं बताया। उन्होंने ये क्लेम किया था कि गोवा इज अ पार्ट ऑफ पोर्टुगल। तो इस मूवी में जैसा दिखाया गया था, तो मैंने फैक्ट चेक भी किया था, तो कुछ वीडियोस में एग्जैक्टली सेम आया था। ये बहुत अच्छी मूवी है, बिल्कुल आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगी। अच्छा, ये तो बाद में इसका लॉजिक क्या दिया था इन्होंने कि पोर्टुगल से क्या इंडिया के बॉर्डर लग रहे थे क्या तब? पेंजिया की नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ। लॉजिक ये दिया था जैसे कि फ्रेंच की बाउंड्री कई आइलैंड है उनसे नहीं मिलती फ्रेंच की। अभी आप देखिए कई आइलैंड है साउथ अमेरिका के पास भी, और कई फ्री पैसिफिक ओशन में भी है। कहीं यूएस अपना कमांड है, अंडर कमांड है यूएस के, कुछ ब्रिटेन के है, कुछ फ्रांस के है। तो वैसे ही पोर्टुगल भी, अब जैसे पोर्टुगल है, आपको पता है ये साउथ अमेरिका में कई जगह पोर्टुगीज बोली जाती है। तो उन लोगों ने काफी दिन वो उसको अपना पार्ट बताया, बाद में लिबरेट हुआ, तो वैसे ही ये पार्ट बता रहे थे। तो बाय द सेम लॉजिक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इंडिया के पार्ट है, इस तरीके से तो इंडिया भी आइलैंड पे है, तो इंडिया को इन्वेड करना बनता है फिर पोर्टुगल पे। हाँ, तो उस समय ये बताया गया था, काफी पहले ये मूवी मैंने देखी थी, तो ये अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ पर्टिकुलरली, लेकिन आज के ये सब्जेक्ट था, इससे मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। हाँ, वो मैंने मूवी देखी थी, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, अच्छी मूवी है। उस समय अमिताभ बच्चन स्टार नहीं बने थे, तो ये बड़ा कहते हैं ना कि जरा अच्छे सब्जेक्ट पर मूवी बनती है तो ज्यादा हिट नहीं होती। 7 इंडियंस नाम है उसका। नवीन, तो अब निखिल भाई की तरफ बढ़ते हैं। निखिल भाई, आप अपना कमेंट करें इसके ऊपर। गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस is observed on December 19 every year in Goa. Goa Liberation Day is celebrated in commemoration of the Indian Armed Forces annexing Portuguese ruled Goa. ये हुआ था 1961 में, ऑपरेशन विजय।
तो इवन 1947 में सो कॉल्ड फ्रीडम डिलीवर हुई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पावर, हस्तांतरण, पर 1961 में गोवा का इंडियन नेवी के द्वारा एनेक्सेशन हुआ था, तब जाके टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव फ्रॉम पोर्तुगीज रूल इन इंडिया फिर इसमें मर्ज हुआ था। और तब पुर्तगाली पायरेट भी बोलते हैं उनको, वो एरिया को। तो गोवा के बारे में अब भारत के ये स्ट्रीम आज बहुत ही रोचक है, और दो तीन किताबों का हमने साझा भी करी है। आप सबको देखना चाहिए कि हमारे भारत की हिस्ट्री जो पढ़ाई नहीं जाती, पर अब हमको स्वयं को देखना चाहिए, और ये इसलिए देखना चाहिए कि आगे ऐसा ना हो, ये हम प्रार्थना करते हैं, और सबसे मतलब पूरे विश्व से प्रार्थना करते हैं कि आपको थोड़ा एक संदेश भी देंगे कि थोड़ी शर्म भी करिए। यू हैव टू फील अशेम कि आप इतने, जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसके बाद भी आप में अकल नहीं आई, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ, और आपको एक आश्चर्य होगा कि सेम रिलीजन के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और वर्ल्ड वॉर 3 और कोल्ड वॉर भी उसी में चल रहा है। तो पूरे वर्ल्ड को अब थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इन चीज़ों से हम भारतीयों को भी सीखना समझना अति आवश्यक है। यही मेरा कमेंट है। धन्यवाद जी, हमारा सीखना जरूरी है। एक छोटा सा एक पॉइंट मैं देता हूँ निखिल भाई का बात को मैं जोड़ के। निखिल भाई, जब भारत सेना का साथ पोर्चुगीज आर्मी जब फाइटिंग किया ना, वो कुछ 7 दिन नहीं चला, 7 दिन में भाग गया था वो। जी जी दादा, वो तो है, क्योंकि तब तलवारों का जमाना नहीं रह गया था ना, और क्योंकि इंडिया यूनाइट हो चुका था, वो सारी जो है रियासतें मर्ज हो चुकी थी ना, अब तो कोई अलग अलग वाला सिस्टम था नहीं, तो अब बड़ी मार पड़नी थी। भागते नहीं तो मार ज्यादा पड़नी थी, फिर जिंदा नहीं जा सकते थे। तो ठीक है, कमेंट ले लिए। एम दादा कोई कमेंट देना चाहते तो लास्ट कमेंट एम दादा से लेते, फिर क्लोजिंग करते हैं, बैक स्टेज में लेंगे बाकी चीजें। कि ये एट्रोसिटीज के बारे में सुनकर अगर हम अभी भी सेंट फ्रांसिस जेवियर को मतलब बड़े समझते हैं, क्योंकि उन्हीं का मतलब आप सुने होंगे सब लोग कि उन्हीं का जो है स्टार्टिंग उन्हीं के द्वारा किया गया कि हिंदूज जो है इन्फिडेल्स हैं, आइडल वर्शिपर्स हैं, उनको जो है सिविलाइज किया जाए, हेरेटिक्स हैं, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना उनका फ़र्ज़ है। तो वो शुरू जो करवाए थे, उससे आपको पता चल ही रहा है कि रिलीजन कितना भयानक चीज़ है। उससे शिक्षा हमें लेना चाहिए। जी दादा, ठीक है, तो शिक्षा हमको लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर कोलंबस वास्को डी गामा नहीं ढूंढते तो आज तक मिलते ही नहीं थे अमेरिका, और ये सब खोए रहते तो ज़्यादा बढ़िया था। तो इसके साथ अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दर्शकों का जिन्होंने हमें समय दिया, और अपने पैनलिस्टों का जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं अपनी अपनी एंड से, जो काफ़ी यूज़फुल होती है नई जनरेशन के लिए, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि ये हिस्ट्री से निष्कासित सब्जेक्ट है, ये टॉपिक्स हैं। तो इसीलिए जो है सबका धन्यवाद करता हूँ मैं, और अपने सभी दर्शकों से जो है अनुरोध करूँगा कि वो हमारे इस कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस पर कमेंट करें। और इसके साथ ही हम इसका समापन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, सबको प्रणाम। जी, जय हिंद।